उसके फोन से कनेक्टेड है क्या? Would you like to start, Naveen? Or I should start? Sir, Yeah. I would like to welcome each and every participant and all the delegates who have joined in large numbers. Also, now I would like to request CA Nitesh Kumar More sir to present his welcome address. Sir, to you. Good afternoon, everyone. Welcome you to this program on Audit Trail, friends. We have none other than Chairman AASB Sanjeev Singhal sir, who has given his consent and is live today, and he has agreed to answer all the queries of the participants. So, friends, if you have any query, kindly very patiently. And if you have any query, you please post in the chat box at the end of this presentation so that it can be taken care of. We also have another program on 14th on the Finance Amendment Act. All the participants who has registered today will has automatically registered for that day also and can join by the same link, the Finance Act. We have the speakers K.K. Chapadia ji with us and Rohit Surana on that day. We also have one program, we have scheduled one program with the CKCA on the BCCI Calcutta, Bengal Chamber of Commerce on 29th, 5 CP hours program on charitable trust, friends. With this, may I now request the Girdhari ji to kindly introduce the learned speaker. We also have Mohit Bhuteria ji, the chairman of the session. We also have Vandana ji, who will speak on Tally. We also have Kunal ji, who had agreed to address us and show us how we would check the audit trail and all this, all the issues in the Juho also. So I will request everybody to kindly mute themselves. Everyone to kindly mute. With these, may I now request Hari to kindly address. Thank you, Nitish ji. And Today is introduce them. Mohit ji. Thank you, Nitish ji. Today we have amongst us CA Mohit Bhutoria ji. He is a chartered accountant, insolvency professionals, a registered valuer. He is the managing partner in C. Bhutoria and Company. He stood first in the CA final exams. He has prepared the guidelines notes for the students and the members on Caro accounting standard, Caro 2016-2020 tax audit. We always get the opportunity to learn something always from Mohit sir. He is impaneled as a chartered in so many quoted companies. He is a regular speaker on various subjects, NBFC expert, merger, demerger, company matter, having vast knowledge and always helpful to the members in practice in guiding them. We welcome you, sir, and all the members will be delighted to hear and listen from you on the subject. Today, the subject is very interesting. This was postponed from 21 to 22, 23. The audit With trail, these, may I now request the audit trail was first supposed to be introduced in 21, then subsequently transferred to 22, and now it became a reality in 23. The accounting software is supposed to have, and the auditors has to comment whether the audit trail is effective or not. This is the subject in which the speakers will throw light and educate us in the matter. With these words, we welcome Mohit sir with the clapping of. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Next, I would like to request CA Jyoti Mandal to kindly introduce our chairman of the session,
who is also the chairman of AASB, CA Sanjeev Singhal. Jyoti ji. Good afternoon, everyone. It's my pleasure to introduce the founder of the CA Parivar, Central Council member, ICI, CA Dr. Sanjeev Kumar Singhal. He is a FCA with 26 years of experience. He has received more than 110 merit certificates for academic achievements and extracurricular activities in school and college. He is currently working as a partner in SR Bartley Boy and Company, Chartered Accountants. He has discharged his responsibilities globally. He has also contributed to the society at large. He has over 14 books published by leading publishers, including Bharat Law House, etc., on Ind AS, GAP, Schedule 2 to the Companies Act 2013, Revised Schedule 6, etc. He has been awarded with CA Professional Achiever Award 2014 for his outstanding contribution to the industry. He has also been awarded with Professional Jai Narayan West Gold Medal Award for his outstanding performance and topper in Delhi University. Thank you. Now I ask Naveen to introduce the speaker. Thank you so much, ma'am. I would like to introduce our learned speaker, CA Kunal Kumar sir. Kunal ji worked as a Zoho team leader in its training and implementation for companies engaged in trading and service sector. Kunal ji has worked as a team leader and conducted internal audit reviews for pharmaceutical company engaged in manufacturing and trading operations in North India and Guwahati. Sir is an expertise in GST and direct taxes and has vast experience and working knowledge of ERP systems, SAP, Tally, and ERP. Next, we have with us a very dynamic and versatile personality among us, CA Vandana ma'am. She qualified her CA in 1998. Ma'am had completed her forensic audit and fraud detection certificate course with ICAI. She is an empaneled as an independent director in data managed by Indian Institute of Corporate Affairs. She is popularly known as TV evangelist, where she helps client and their team to become functional experts. For the benefit at large, she has recently started her YouTube channel, Tally Simplified by CA Vandana Dodhia. Ma'am also served as the co-opted and member of the various committees of WIRC. She is an important social contributor, motivational speaker, and a passionate singer. Thank you, ma'am. Thank you for joining us today. Next, we have with us CA Kailashpati sir. Jyoti ji, can you please introduce him? Jyoti ji, I think you are muted. I think Please unmute. Naveen, Yes. he has came there. If he is not there, we can introduce him when Yes, he yes, comes. okay. 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 Thank you, sir. Kailash sir is there, I think so, sir. Kailash sir is there. Kailash Mamia sir is there with us. He has kept. Yes. Hello. Ravi, if you can Yes. start your video. I want to 10 minutes, sir, for this. Okay, no issue. We will introduce him later. Please take Sanjeev Singhal sir and Mohit Putaria ji in this panel. Okay, okay, sir. Okay. Yes, yes. So, Nitish ji, we can start. Yes, please. Mohit ji. Yes. Yeah, thank you, Nitish ji. I must congratulate you for organizing this program, a very important subject on the audit trail, and the number of audience speaks itself for the importance of the subject, and we are very glad to have Sanjeev Singhal ji to deliberate on this subject.
Just to introduce the subject for the members present, MCA-wide notification issued in 2021 had issued the concept of audit trails, and there was amendment to a company's accounts rules. And first it was said to be applicable from 1st April 21. Thereafter, twice it was deferred, and now it is effective from 1st April 2023. Therefore, with effect from this date, that is 1st April 23, all accounting software used by Indian companies must have an audit trail feature. Now, question is, what is an audit trail? So, an audit trail is a detailed chronological record where accounting and other financial details are traced and tracked. I think a number of members are not on mute. Can all of I will request the members to kindly mute themselves. Please do not disturb others while the seminar is going on. Please appreciate that other members get disturbed when you unmute yourself. Request with folded hands, kindly mute yourself. Please do not disturb the speakers, please. Yeah. So what should be included in audit trail? What is required is that details of every transaction that takes place within the company, including the date, amount, and nature of every transaction. The software, should preserve the audit log also until the accounting records are no longer valid. Line stamp should also be on the software. But a lot of question also arises as to what was the need of introducing this concept of audit trail. Perhaps governments wants to track all the transactions which are taken place, or backdating of entries or modification of entries in the software. Perhaps this seems to be the intention. Now a number of question arises, like today we are on 11th April and we understand there are a large number of small, medium companies who are, doing accounts on Tally or any other software for that matter. Till now, those software do not have an enabled trading log. So what happens to these situations? Now, there are many small companies who do not have much transactions, akin to something like a dormant company, which may do, record all the transactions once as at a year. And because, say, some investment companies, some property companies, they would have hardly 10, 15 transactions in a year. So it may not be that they record the transactions frequently, but may record the transactions once a year or twice a year. So what happens to all those cases? So some entries may be backdated. Many small companies may not record entry on a day-to-day basis. So maybe some cash entries or even bank entries may be done on a weekly or a monthly or a fortnightly basis. So what happens in that cases? What will the impact? Whether it would say that the provisions of Companies Act and these audit trail have been violated. Now, there may be companies who may have having huge number of entries. So again, you have to have a backup and the hardware must be so that the entire backup of the transactions, the audit log is maintained, and these are also required to be maintained for 8 years. So how to come across these situations and how to handle these situations? So I think Sanjeev sir will throw light on each and every aspect of this. So with these words, I would now request Sanjeev ji to kindly start his deliberations. Thank you, Mohit ji. I will say the EIRC chairman, Nitesh Moreji, because once a chairman, always a chairman. The learned session chairman, Mohit Bhai, my co-speakers, all the very, very esteemed participants. When an invitation comes from EIRC these days, because EIRC is ruling the institute from 4 years. First the vice president, then the president, then again the vice president, and next year, again we'll have the president from EIRC. And Ranjit Bhai, who is the vice president, is again a very dear friend. And the meeting also, which is scheduled, is by Dr. Devashish Mitra. So I said it is EIRC versus EIRC, you decide. So he has agreed to postpone it to 5:30, and which has enabled me to be with all of you. Friends, audit trail is the talk of the town at this point of time. Last week, we have done a webinar from the institute. There were 4,000 members. And I really appreciate Nitesh Bhai that in a study circle meeting, there are more than 1,000. That shows
that shows the charisma that he has. And of course, this is known, so there is no doubt about it. And I promised him that, while the presentation will be short, the reason being that the law is very, very clear, but I'll answer all the questions. So maybe once the presentation is done, maybe the session chairman, Mohit Bhai, can keep asking me questions in a rapid fire round, and I'll answer those questions. But I'll say that it is one of the biggest reform that the government has done. And this should have come 2 years ago. On the demands of the company, it was shifted by 1 year and then again by 1 year. And there was an anomaly in the law, that is for FY 22-23. It seems it is applicable for auditors, but not for companies. So we got in touch with the Ministry of Corporate Affairs. They have verbally told us that auditors are not required to report for 22-23 because it's not applicable for the companies for 22-23. So there is no question of reporting. So accordingly, we have incorporated the clarification in this implementation guide. This implementation guide was ready for last 2 months. We were waiting for this MCA clarification. So the moment it came, we have issued the technical guide. Please go through this. This is a very small piece of technical work, but it will answer most of your questions. Of course, in my presentation also, I'll be drawing heavily from this implementation guide, which has been issued by my board, the Auditing and Assurance Standard Board. And I'll keep the presentation and the deliberation to be as simple as possible. But yes, of course, do let me know that, if you need any clarifications further. Mohitji, is my screen visible? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, fine. Yeah. So we'll be talking about the subject, the requirement of the Companies Act. We'll also be talking the key management and the board consideration and the auditors consideration, and the interplay between the management requirement and auditor reporting responsibility. Illustrative reporting. This technical guide actually gives very detailed illustrative reporting under different circumstances. And what are the next steps for the companies and the auditors? And what Mohit Bhai said, that if a company is small and has missed out on it, then what happens? I mean, my answer is very clear. Small or large requirement, this is the law of the land. So it does not matter. If it is applicable, it is applicable. And I can tell you that in the few years' time going forward, it will be applicable to the LLPs, to partnerships, and maybe to sole proprietor as well. And it should be applicable. It's likely to be applicable for the income tax purposes also. And I think once we have this, probably if there can be a law in India that any accounting software has to have audit trail, and that audit trail cannot be disabled, then there'll be no requirement for the auditor report also. Nitishji, I think some people are unmuted, so that's why this disturbance may be there, but I can understand when there is such a large number, maybe. Sanjeev sir, ma'am, unmute yourself. I have muted everyone. Yes, sir. Everyone is now muted. Sanjeev sir, you are on mute. I'll share my screen again. So next time if it happens, my request is you unmute me, because otherwise I had to stop this screen and then come out and then do it again. And just go to the slide. Yeah. Okay. So many of the ERPs already have this facility, SAP, Oracle, etc. And this facility has been there for many years. But there's been a concept of super user. That is, there is one or two users who have the power to override that audit trail. Now in the new law, there is no concept of super user. So whether it is Tally or it is Busy or SAP or Oracle, all are at par. And I believe that most of the accounting software today, including Tally, have the audit trail now. So there is no plea that a company can take that the software was not available. And I always believe that even if it was not available, it is a problem of the company. We should not take the problem on ourselves and fall into that trap.
And in fact, let me take 1 minute to tell about what we've been doing in the AASB. So right now the bank audits are going on. So there is an expert panel which works, then there are 50 experts. So you can ask your questions on bank audit from them. It's free of cost. And from 16th April, we'll be starting a statutory audit panel. So if you have a query in any statutory audit and the query pertains to auditing matters, again, you can write to our experts and they will answer within 24 hours to 48 hours. And again, there is no fee for it. And soon we are coming out with a auditing standard checklist, auditing working paper templates, so that you can use them in this audit season. And we are, of course, doing a number of educational programs. So far in this council year, in 2 months, we have done about 71 programs. Okay, now back to audit trail. So the changes are applicable from April 1, 2023, and it does not matter which company it is. As long as it's a company, then it has to maintain an audit trail, and the audit trail cannot be disabled. Look at the requirement. If you look at the requirement under the Companies Act, this is popularly called as Rule 11G of the auditor's report. So this reads that from FY beginning April 1, 2022, and I know it should have been 23, but there's an anomaly in the law, which we are correcting through this implementation guide. Auditors report to state whether the company has used such accounting software for maintaining its books of accounts, which has features of recording audit trail. Audit trail is what? Just like it means the source, just like a money trail, that you go to the source, you look at what has happened. So there is an audit log, and an auditor is also required to report whether the same has been operated throughout the year. Throughout the year. So if today we are on 11th of April, we say, no, we attended this seminar today, and from now onwards, look, we will follow this. Well, it is good that you will follow this, but for first 10 days, please qualify the audit report. There is absolutely no leeway that instead of 1st April, we can apply it from 11th April. One also cannot take a plea that 1st April was a Saturday and 2nd April is a Sunday, so we will apply from 3rd April. No, this rule has been there for the last 2 years. So it is for the companies that they should have prepared themselves. So the rule is that the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software. And that audit trail feature has not been tampered with. And audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention, which is 1 + 8 years. That is for 23-24, the company will have to maintain the audit trail till 31, till actually 23-24 is the first year. So for 8 more years, so till 31-32, they will have to maintain the audit trail for this year. Look at what the rule says. Rule 3 of the Companies Accounts Rule 2014 says that from FY beginning 1st April 2023, company which uses accounting software for maintaining its books of accounts should use only such accounting software which has feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in the books of accounts, along with the date when such changes were made, and ensuring that the audit trail cannot be disabled. So now there are people who says that, look, to err is a human. So what if a mistake has happened? Does the law expect us that we are God and we cannot make a mistake? No, that's not the expectation. As a commerce student or as an accountancy student, all of us have learned the rectification of error. So what is expected is that the management will pass a rectification voucher or a rectification entry or a journal entry to rectify that error rather than modifying that existing entry. Then people say that, look, 31st March accounts will never be closed on 31st March. Suppose they are closed on 3rd of August. So what do I do with those closing entries? Again, no one is denying that there could always be entries which will arise subsequently and which will belong to the previous period. Now, in that case, do the entry in the current date, say, for example, 3rd August. But the value date, for example, in bank, there is a concept of a value date. The value date has to be 31st March. So you cannot modify an entry. You cannot delete an entry.
You can always pass a rectification entry. You can always pass an entry in the current date, even when the period has passed. The value date could be the prior date. But yes, the professional skepticism also has been there, has to be there. Suppose on 31st of July, somebody is introducing cash on the date, value date 25th March. Then as an auditor, you must be alert, saying that is it a fraud? So there has to be judgment of the auditor whether these are bona fide transactions or not. And in any case, the case must not be even a one single instance where the audit trail has been tempered, or the entries or the audit trail for a certain period of the year are missed out. So now, if you look at this implementation guide, this clearly says that the applications, the requirements are prospective, and it applies to all companies, including a Section 8 company and a foreign company. And in case of a consolidated financial statement, the components which are outside India, they will not be covered. An audit trail has also been defined under this guide. It says an audit trail is a visible trail of evidence, enabling one to trace information contained in the statements or reports back to the original input source. It also defines what is an accounting software. It says accounting software is a computer program or a system that enables recording, maintenance, and reporting of books of accounts and relevant ecosystem applicable to business requirements. And of course, we know that the functionality of each accounting software will vary. And I always believe that these are the books of original entry, those 8 books of original entry, which is cash book, and then you have sales book, purchases book, sales return, purchase return, bills receivable book, bills payable book, and journal proper. And these 8 type of books of entries, you need to keep an audit trail. People say that if there is a subsystem, for example, a fixed asset record is a subsystem of the main accounting software, whether there also an audit trail should be there. Yes, if from a subsystem an entry is directly flowing into the books of account, for example, if depreciation entry is directly flowing from that subsystem to the accounting software, then yes, even on that subsystem, it needs to be there. However, if somebody is calculating depreciation in Excel and then passing a JV using that information given in that Excel, then in that case, that Excel will not be treated as an accounting software. However, if again, say the consolidation is done in Excel, the elimination entries are done in Excel, and no separate books of accounts are maintained for consolidated financial systems, then in that case, look, this will be covered in this system, in this audit trail requirements. And now let us see what does books of accounts mean. Books of accounts are defined under the Companies Act. So there is nothing that the guide would have added. It includes all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipts and expenditure take place. All sales and purchase of goods and services by the company, assets and liabilities of the company, and the items of cost. So now, also keep in mind that the amendment made to Rule 3 regarding the access to books of accounts and daily backup in a physical server located in India require that these are accessible at all times, and backup on a physical server in India. If the books of accounts are maintained on a system outside India, then the backup has to be taken in India, and the backup has to be on a daily basis. Now, again, many people come back and say that, look, this is impracticable. We are a foreign company. Our servers are there. Whatever it is, please ask them to make a representation to the Ministry of Corporate Affairs. As far as we chartered accountants or as an auditors are concerned, this is a law and we need to report according to the law. Now, these examples I've already given you.
Now, I understand that there could be some implementation challenges, which people ask. People say difficulties in amending accounting software maintained at a group level, which is outside India. Again, that's a problem of the management, not of the auditor. If they feel that they want to do business in India, then the law prevailing in India needs to be followed. Again, people say that we make information in Excel, consolidation adjustment. Well, if consolidation adjustment and your final consolidation entries are the only consolidated books of accounts, it needs to have an audit trail. Otherwise, what a company can do is company can post the consolidation entries into another, treat them as another set of books of account and enter them into your Tally or Busy or SAP or Oracle, etc. Similarly, current tax, deferred tax computation. If you're just using Excel for computation purpose and not importing entries from there, then you need not maintain audit trail in that portion of that Excel. Now, people say that what is the definition of change for audit law? That there is a need for a clear definition of what would be considered as change. Change means any change. If it's a change in the amount, change in the narration, deletion of an entry, everything would be considered as a change. People say that the ability of company to invest in such software system and cost of maintaining audit trail. Again, when it's a compliance issue, first of all, I do not believe that this is a prohibitive cost. Say for example, if Tally is to be talked about, I don't think that it's an expensive software. And even if it's an expensive software, if a company has chosen to be a company under the Companies Act 2013, they're supposed to follow it. Then there are people who say that for small and medium-sized businesses, there's a challenge. Again, the point is, if they've chosen to do their business as a company, that's a law that needs to be followed. Now, what the management needs to keep in mind. Management and board of directors, we know, are primarily responsible for selection of an appropriate accounting software and for complying with the applicable laws and regulations. Now, the accounting software may be hosted and maintained in India or outside. It may be on-premise, on cloud, or maybe SaaS model, software as a service. Books of accounts can also be outsourced to a third party or to a service organization. That all can be there and all are permissible. There is nothing wrong in it. Management is required to identify the records and transactions that constitute books of accounts. But at the same time, as an auditor, we need to see whether that identification is right or not. Management needs to see that those softwares have audit trail feature and that it captures any changes made to the system. When the changes were made, who made the change, and what data was changed. The management is required to ensure that audit trail is appropriately protected from any modification, and specific IT controls needs to be there. So this internal control over financial reporting should also undergo change to incorporate audit trail. And again, I said these are to be maintained for a minimum period of 8 years, 1 + 8 years, that is current year plus 8 years. For the board of directors, I believe that they have an important role to play. They must take on record that policies and procedures as laid down by the management in respect of assertion and conclusion on the adequacy and operating effectiveness of audit trails and deficiencies, significant deficiencies, and material weakness. The difference is that if it's a material weakness, it gets reported in the audit report as a qualification, identified by the management, internal auditors, and the auditors. Now, what should an auditor do? To my mind, an auditor job is very clearly laid down in the law. Through his audit report, he has to speak. He should ensure that any software that maintains records or transactions that fall under the definition of books of account will be considered as accounting software for this purpose. And unlike reporting on ICFR, an auditor is required to report that the audit trail feature has operated throughout the year for all transactions recorded in the accounting software. And then while verifying the accounting software used in maintaining the books of account, auditors should consider the software configuration that controls enabling or disabling of the audit trail.
he will have to apply the ITGC and ITAC, IT General Control and IT Application Control. And he has to see that audit trail was enabled throughout the year. He has to do a sample check. He needs to see that who all have access to the configuration. That is, who all can modify. To my mind, that right should not be there with anyone. And any changes, he has to see any changes to the audit trail configuration during the financial year, and also from the date of financial year statement, but before the date of auditor report. He has to ensure that there is a periodic review mechanism implemented and operated by the management for any changes to the audit trail configuration. He has to see the completeness and accuracy of audit trail and the logs thereof. And if a management has done any testing, which they are supposed to do, he should also see what's the result of that testing. The auditor should also see the management's identification of records and transactions. He should test whether that is right or not. He should inquire with the management on how they have evaluated changes which are required for maintenance of audit trail as part of changes or upgrades to the accounting software. This is particularly true for this 1st April 2023, or if a company comes into existence later, then at that point of time. But there actually it won't be changes, it will be a fresh start. An auditor should consider involvement of IT specialist or expert to test the IT control if that in-house capabilities are not there. Auditor should evaluate management's policies in this regard and test control to determine whether the feature of audit trails have been implemented and operating effectively throughout the reporting period. He should make sufficient inquiries with the management for the record retention period and should also do a test check. And in case these have been outsourced, accounts have been outsourced to a third party or to service provider, he should consider that report under SOC 2 or SA 3402 covers audit trail requirements or not. Auditor will have to document the work performed on audit trail such that it provides a sufficient and appropriate record of basis for auditors reporting under Rule 11G and evidence that the audit was planned and performed in accordance with this implementation guide and comply with the requirement of SA 230 on audit documentation. Finally, the auditor should obtain suitable management representations also, but keep in mind that management representation is not a substitute for the audits. Now, what is the interplay between management's responsibility and auditor's reporting requirement? Look, the management responsibility is that they choose an audit software. I mean, it's only in the context of books of accounts. And they need to have an accounting software which is capable of creating an audit log of each change made in the books of accounts. Whereas auditors' reporting responsibility is in respect of audit trail in accounting software has been prescribed for all transactions recorded in the software. Now, an auditor should also keep a watch on the possible fraud scenario. For example, in the beginning, I said, if cash is introduced in the backdate, or if the modification of entries have happened, this could be an indication that there can be fraud. So auditors should keep that in mind. And he may also come across a scenario, where he will have to see whether he can rely on controls, whether he need to withdraw from that engagement. But that will depend upon how serious these changes are. And if there is a fraud, he should have to evaluate reporting under CARO or under 143(12) of the Companies Act. And of course, as I said a short while ago, he will also have to assess the impact on the ICFR reporting. For FY 22-23, since the requirement for the companies was not there, so we are given an illustrative reporting under the section report and other legal and regulatory requirement. An auditor can say that as proviso to Rule 3.1 of the Companies Accounts Rule 2014 is applicable for the company only, that is with effect from April 1, 2023, reporting under this clause is not applicable. Now, let us take an example where there is an unmodified report in standalone financial systems, standalone financial statement.
then the reporting wording could be based on our examination, which includes test checks. The company has used an accounting software for maintaining its books of account, which is a feature of recording audit trail, edit log facility, and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with. Additionally, for next year, you will say, not this year, because this is the first year, the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention. But please remember that this sentence will be applicable from next year. Now, for consolidated financial statement, what could be an illustrative report in case of an unmodified report? One can say, based on our examination, which included test check and that performed by the respective auditor of the subsidiaries, associates, and joint ventures, joint operations, which are companies incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, the company, subsidiary, associates, and joint venture or joint operations have used an accounting software for maintaining its books of account, which is a feature of reporting, recording, or audit trail, and the same has been operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with. And again, additional sentence on audit trail preservation. And we also need to keep in mind that if it's a consolidated financial statement and certain components have been audited by the other auditor, you can draw and you should draw a reference to that. Now let us take an example of a qualified report, which is called as a modified report, which could be qualified report, which could be adverse opinion or a disclaimer of opinion. Say, for example, fixed asset software did not have an audit trail. Then apart from the standard language, one can write, except in respect of maintenance of fixed asset records, wherein the accounting software did not have the audit trail feature enabled throughout the year. Now, suppose for consolidated financial statement, there are qualifications. Again, you can say except for the instances mentioned below, and then give the qualifications down below. For example, it could be instances of accounting software for maintaining its books of account, which did not have a feature of recording audit trail or edit log facility, and the same was not operated throughout the year for all relevant transactions recorded in this software. Instances of audit trail feature being tampered with, and instances of non-preservation of the audit trail. Again, non-preservation will come from next year. Now, what are the next steps for the companies? I mean, if you have to advise a company, I'll say that take an inventory of software in use, identify the processes, we call them FSCP, financial statement close process, which are relevant from our financial statement perspective. Identify critical elements in each of the processes for which IT logs, changes, or trail may be required. Discuss the data requirement with the software vendor, the possibility and cost of generating and maintaining data. For outsourced processes, communicate with the service providers, reset the expectation, and modify the contracts. Discuss the approach for compliance with the MCA requirement with the board or audit committee and the auditors. Identify the areas or processes or elements in the processes for which trail is not possible or not feasible. Assess the reporting implications, both in the financial statement and the auditor's report. Assess the compliances with the laws and regulation and the response. And enable the audit trail. We understand it's not a simple task, but I'm sure that the companies would have done it. And if there's the need to change the software, then change the software. For the auditors, they must understand the business. They must understand the key processes. They should involve an IT expert if that expertise is not there in the firm. And then SA620 using the work of an auditor's expert can be applied. Plan early, communicate with the management. And if the audit trail is ineffective, please report. That's what I would say as far as the presentation is concerned. And, I'll be happy to take up the questions which might have come. Yeah, Sanjeev, from your derivation, let me start you by asking a few questions. First, it applies only to companies which are engaged in, which are accounting
using software. If they are maintaining Yes. physically, then this You clause are is right. not applicable. Then this clause is not applicable, but then you will report that fact in the auditor's Correct. report. And you know, this actually tantamounts to a qualification, although strictly speaking, it is not a qualification. Right. And second, assuming certain books of accounts are maintained in a software which has an audit trail edit log, but what happens, I am also maintaining certain records in Excel, say stock records, Qualification. fixed register, that will be a qualification. Qualification. Yes. So question arises, why did you say so? Because it is always Because possible. No. I mean, anything which is a part of books of accounts needs to have an audit trail. Right. So therefore, if I'm maintaining books of account physically, there is no requirement of audit trail, but yeah, I'm maintaining Excel, there is a requirement of audit trail. Absolutely. If you're using any software, any accounting software, then yes, audit trail is required. Okay. So Excel, you will say it is an software. Yes. If it form parts of books of accounts, if the entries are flowing from there in the books of account, or if it is used as maintaining books of accounts, then it is a software. So one point in the audit report, it was said that the audit trail has operated throughout the year for all transactions recorded in the software. Now for 23-24 current financial year, till date, people have not started recording entries in the software. After what you have delivered, so people come to understand that, yes, my tally should have an audit trail. So I go to my vendor, I get the audit trail enabled, and only after 12th or 13th April, I start recording my entry. But that even relates to 1st April, 2nd April, so on and so forth. That's fine. That's fine, Mohit bhai. Yes. The value date could be different. As long as backdating is not done. As long as backdating is not done, that's okay. If they are recording all transactions tomorrow, in the date of 12th April, where value date being 1st April onwards, that is fine. So today on 12th April, even if I record some entries of 1st April, 2nd April bank entries, that is fine. Because only as a value date, but not as the date of posting. So what is the difference? Date of posting has to be 12th April. Okay, so this means what you mean to say today, I cannot record any entry of 9th April. No. You can record entries of 9th April in 12th April date, value date being 9th April, but you can't go back to the system, change the date of recording to 9th April. So you mean to say then companies, entities, like generally what happens today, if I am recording an entry on 12th April, so my date of entry will be 12 and say some bank entry relates to 9th April. You are saying you record on 12th April, but it should, in the narration, you may write it as at 9th April. No, apart from narration, there is a concept of a value date in the accounting software. So that value date could be 9th April, but this entry cannot be recorded as if it has been done on 9th of April. But then the question arises, even if the transactions have been backdated, but they are correct and they have not been edited, because what the standard what the law requires is that I have to maintain an edit log. So today on say 31st March 24, I am a small investment company or a property company. I record all the entries throughout the year on one particular date without. Sir, we are not meeting the requirement of regular books of accounts then. Okay. So audit trail is not an issue there, but regular books of account is an issue there. Yeah. Because auditors are required to report whether there is an edit log. Agreed. So, entries are recorded. If they're recording, if they're recording all transactions on 31st March 2024, with the posting date as 31st March 2024, it should be clearly visible that these have been posted on 31st March 2024 and not on any back date. That's fine. Okay. Then that is fine. Only from the perspective of audit trail, not from the perspective of maintaining regular books of accounts. Okay. So if there is any deletion in entry and even trail is qualified. Qualified. But question is, why should it be qualified? Because there may be that today he has made an incorrect entry. That entry has been deleted. So there is a log of that entry. Sir, can't be deleted. It can't be deleted. So no entry can be deleted. If it is deleted, then audit trail has been tampered with. Pass a rectification entry. Okay, you mean to say in the software, once we record an entry, we cannot delete that? Absolutely, 100% sure. Even the amount cannot be changed, the date cannot be changed, the narration cannot be changed. Okay, so we have to reverse it and fresh record it. Absolutely.
That's the objective. Sir, you have said regarding CFS that even for CFS, if we are maintaining recording all the entries, what you call consolidation, adjustments and everything in an Excel, and there cannot be an audit trail for that, assuming that if we are maintaining in an Excel, then we have to pass entries in the books of accounts. Absolutely. Otherwise, you have to qualify. Okay, but practically, sir, when we are maintaining a standalone, say there is a company X which has 20 subsidiaries. You mean to say for all those 20 subsidiaries, I have to record the entries in the tally and then prepare a CFS? Mohitji, just do this consolidated entries, elimination entries in say for example, somebody is using tally. And this is the best way of consolidating accounts without any mistakes. If you're passing journal entries in consolidation in an accounting software, you will never make mistake. Okay. Okay. But if somebody is maintaining only in Excel, and from there they are drawing up the final consolidated financial statement, then this audit trail, if it is not there in Excel, and as of now it is not there in Excel, then then this has to be reported. Okay, so therefore, basically in Excel, since we do not have any audit trail, it is advisable to do everything in a software which has an audit trail enabled. Yeah, absolutely. And this also keeps a permanent record. Excel, the data can corrupt any time. You can always overwrite the sheet. Understand the intention of the law. They say people modify the entry, people delete the entry, people backdate the entry. Why? When rectification mechanism is there. Okay. Sir, one more point. Like you said, accounts are maintained by the Mohitji, ask as many questions because I promised to Nitesh ji, there is no problem. Sure. Sir, you said accounts are maintained by third party. Now, if accounts are maintained by third party, how will the auditor determine audit trail? Then he has to so first he has to apply that auditing standard, rely on the work of an expert. He has to determine his competence, right? He has to determine his independence, right? Once that has been established, he has to take a SOC 2 or that other standard report. And in that report, that scope should also cover वो जो service organization है, उसका भी audit होना जरूरी है. And that report should cover audit trail. So if he has evaluated the work of an expert, and if that scope of work covers audit trail, then he can rely on that report of that other auditor on that service organization. Okay. Sir, on materiality, sir, no materiality for this. No materiality for law. Okay, okay. So therefore, it is a factual statement. If it is done, it is done. If it is not done, it is not done. Mohit bhai, the law is crystal clear. Right. That's why I said ask rapid fire. I'll not say on one hand this is possible, on the other hand this is possible. There has to what be about the closing only entries? one hand. So there is a one question that a company has only 10 transactions by way of rental income, only by way of bank entries. So what you have said, even if you do on 31st March, the value date should be the respective date. Plus there will be an issue that you are not maintaining your books of account regularly. And also, Mohit bhai, you're right. Say, for example, on 31st March, don't say that this entry was passed on 30th April, then 31st May, then 30th June. No, that will not work. So the software, if it is a value date concept, then I think that will be fine. But assuming for the sake of argument, a company has done this value date, as you said, he has passed entries on 31st March 24, but value date is the respective date of the transaction. Now, assuming it is a very small, medium company and materiality is not applicable, this, as you said, materiality is not applicable for this angle. Auditor says that proper books of accounts have not been done. So do we report under 143 say that proper books of accounts as required by law have not been kept by the company? Yeah. So that I mean, if proper books have not been kept, but just because that the entries have been passed at one go, the auditor will have to evaluate: is there an impact on the financial statement? That he has to evaluate. So therefore, assuming there is no impact, then there should not be a problem. Yeah. And my request to all my fellow professionals, don't try to find out ways and means for the management. Correct. This is a reform, and if we fail to rise to this reform, government will not spare us. Right. We must rise to the occasion. So another question is payroll accounting outsourced. In that case, again, audit trail is applicable. Again, the same.
again the same procedure to be followed. Okay. So, sir, are there any more questions? Naveen, you can. Are there any more questions in the chat box? मुझे तो लगा था बहुत सारे चैट में 123 हैं, पता नहीं उसमें से क्वेश्चन कितने और Sir, मेंबरशिप they are नंबर said कितने that, हैं. please explain what happens if records are lost due to computer malfunctioning of hardware. कंपनी के प्रॉब्लम है सर, ये सब Okay. बहाने हैं, ये सब बहाने हैं. मैं कह रहा हूँ, we must rise to the occasion. People are asking me question के impress देते हैं तो क्या करेंगे? Sorry, our profession has to put a stop on all these things. It is company's problem, not our problem. Right. If Hello? records are lost, then where is the disaster recovery plan of the management? Right. क्या हो गया? कुछ तो हुआ नहीं जब ऐसे अटेंड कर रहे हैं. Oh, so Nitesh ji. Can I ask a question, please? Yeah. Please. Yeah, our And fixed we assets also register. after this we have Kasi Khandelwal, our Central Council member. He has raised hand, so kindly unmute after this question. Yes, please. Hello. Yeah, please ask. Shall I go ahead? Yes, Shall I go Yeah. ahead? Yeah. Yes, Fixed please. assets register, is it part of books of account? If the entries are flowing, if it is a subsystem, if the entries are flowing from there to the books of accounts, to the entries they are being passed, then yes. But otherwise, if you are just using it for the memoranda records, then no. Yeah, because It is a part of books of account. No, sorry, it is a part of books of account. I'm just saying for the purpose of audit trail. oh, it is a part of books of account, even if it is maintained manually. 100%. Even if it is maintained Yes. manually. Yes. But if it is maintained manually, how can we keep audit log? No, then you just say that the fixed asset record is being maintained on a manual basis, and the audit trail cannot be tested on the same. Cannot be. Okay. Thank you. If every company in India wants to shift to maintain manual books, I'll say good luck to them. No, I'm particularly talking about fixed assets register, because a lot of companies do maintain manually. Which is not right, sir. Which is not No, right. but some cases but the he volume can- is not so no. high. Companies has a right to maintain. Companies has a right to maintain. As an auditor, please assess the risk to you as an auditor. Mhm. Because the manual records can be changed anytime. And once it is maintained in Excel, Sir, now NAFRA is expecting us that the auditor will make his working paper and host them on cloud. Yeah. Right? And which is the right thing to do. This era is of transparency. Okay, thank you. Kashi sir. Sanjeev bhai, Yes, sir. namaskar. Namaskar, sir. I have been listening, and actually our Mohit was too much interactive with you, so at least our participants have gained enough knowledge through your experience and Mohit raising so many issues. The very limited issue, as I could understand, and that has been brainstorming for me, because being on the board of couple of companies, being auditor on couple of companies, so from management side, how they are handling, how as an auditor we are to take care, how as a responsible person in the capacity of director we are expected to take care of this situation. At the outset, I am with the institute, I am with the regulator. Audit trail was very much needed. Maybe it was expected well beyond at a very early date. Maybe it has come only with effect from 1st of April 23. That is fortunate for us, I can say. Now the limited question is, in spite of the institute educating the members, in spite our members being in the organizations and heading the organizations, but all these things may be apparently looking very good and we must comply with, and all these things are there. But fault finding by the regulator is always a situation. And as Mohit mentioned a couple of minutes back, that proper books of accounts and records have been maintained by the company. Value date, we can say, it is on that the earlier date, recorded on the current date. But for the purposes of proper books of accounts, if a regulator will come, they will consider that this is only an afterthought and it is not a regular feature. Under these circumstances, lot many problems and Pandora boxes would be opened
by the regulators. And obviously, as a council member, I would request you, because in front of you, you are the person whom we are talking about audit trail today, that regulators must also consider all these issues, because it may be the first year, 23-24, it is all right. But again, for up to 8 years, these things will continue, and at any time, the situation should not be considered that proper books accounts have not been maintained, or if the auditor is going to write proper books of accounts have not been maintained, that will be a direct disclosure and a qualification in the audit report itself. And no management would be interested to have that report. At least supposedly I, as an auditor, want to give this type of report. Neither I will accept it as a board member that the auditor will be giving, nor my client will be accepting that खंडेलवाल जी आप ऐसी रिपोर्ट दे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे. कल डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, इसका क्या सॉल्यूशन कैसे रहेगा, या व्हाट वुड बी दी योर व्यू एंड सजेशन, सो दैट आवर मेंबर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड दे आर नॉट ट्रैप्ड कि ऑडिटर से कल नेफ्रा आ जाएगी, कभी सेबी आ जाएगी, कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्रार आ जाएंगे, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएंगे, तो हम तो उसी में घूमते रह जाएंगे सर. Please don't mind, I have elaborated. No, I understood, you are sir. the competent person, I know very well, and you must have been a very proper answer to it also. But still, for my participants who are more than 500, at least I would seek your opinion, please. Sir, the best answer to this is that the company should comply, and in case of a non-compliance, the auditor should report. चलिए देखेंगे, तुम कर लो. One point you said, and a number of Yeah, people if, are asking this question, that anyone have question can raise hand in the software. Yeah, that Excel does not have an audit trail. Therefore, if you are maintaining say stock records and fixed asset records in fixed asset registered in Excel, it does not have an audit trail. Now, if the auditor says that look, these companies are maintaining these two records in Excel, which does not have an audit trail by way of a qualification, is that sufficient for the auditor? Yes. Okay. Okay. No, they see, Mohit bhai, if those records are substantive and this lack of audit trail impact their opinion otherwise, then this is what they have to evaluate whether it could lead to frauds. So if the auditor comes to the conclusion that no, truth and fairness of the financial statements are not affected because say it is a very medium, then it is fine. Yeah. So if the auditor says in the report that yes, books of accounts are maintained in software which has edit log except for fixed asset and stock records, and if he states so, that is factual statement, then that is fine. Yeah, that is fine. So somebody has asked about closing entries. So as you said, if it is even if it is passed on 31st March as on 11th April, that is fine. Yeah. Sir, on CFS, you said that you better incorporate the entries in the software. Now, question is if you are doing it on Excel. If you are not doing it on Excel, then it's okay. Now, if we are not doing on Excel, say we want to incorporate in the software and say we record all the subsidiary trial and all the cross adjustment. Now, मेरा ये जो accounts है, इसमें तो CFS का पूरा हो गया, तो अगला साल opening closing के लिए I have to reverse all those entries. नहीं सर, ये मैं CFS की अलग से books बनाऊंगा. अच्छा, तो दो tally रखेंगे, one for standalone, one for CFS. Yes. Okay. Sanjeev sir? If they are using tally. If they are using tally. If you are using tally. Okay. Sanjeev Yes, sir, I have one question. Yeah. While listening to your lecture today, on the throwing lights, once you said that finalization can happen say on the 3rd of August. So in that case, there may be maybe one or two accounts because अभी हमने split कर दिया tally का data, तो as of now जो भी data है वो आ जाएगा और बाद में जब हम अपग्रेड करेंगे मतलब फाइनल ऑडिटर साइन करेगा दैट टाइम पे सब जो 5 अकाउंट में बैलेंस चेंज होती है उसके ऊपर ऑडिटर्स ने क्या रिपोर्ट में लिखना है क्योंकि टैली में तो एडिशनल एंट्रीज है ना. हां ये तो एडिशनल एंट्रीज हैं व्हिच आर एडिशनल एंट्री सर माय क्वेश्चन इज दैट आई एम स्प्लिटिंग द डेटा एज ऑफ टुडे फॉर एग्जांपल सो आज की ट्रायल बैलेंस में जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो सीधा आपके नए साल की बुक्स में आ गया एंड एडिट लॉग इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑडिट ट्रेल आल्सो स्टार्टेड बट आई विल गेट द फाइनल बैलेंस शीट एज ऑन से 31st of May
when you are signing the audited balance sheet. At that time, there may be 5 accounts only where I may be required to modify the opening balance due to the There audit. could be 500 also, Vannaji. It can be 500. There could be Agreed. 500 also. Arey, Make a 5,000. JV. Make a JV. You mean to say Make a JV in the current Acha. date, value date being 1st April. ठीक है. So that is what we wanted to understand, how to bridge that gap. Thank you very much. There is one question, answer is obvious. Even small companies have to follow audit trail, right? And sir, one question is, what about attendance records are maintained manually? They are not books of account. They are not books of account. Sir, can I ask a question, please? Yeah, please. Yes, sir. What is the penalty and consequences by chance if audit trail is not That I maintained don't and know, reported sir. by the No. this? So that I don't know. We have to look into the companies. But it will be For an auditor, residual penalty sir, as per Companies Act. No, sir. 50,000. For auditor, though, it could be, a matter of disciplinary also. No. Auditor has qualified, sir. But what is the position for the management and company? So company, I don't know. So जो भी books of accounts non-maintenance का violation है, section 129, the company has to suffer that consequence. Thank you. Yeah. So one question, Mr. Ravi Joshi, Mr. Sanjay Jain. Yeah, hi, this is Sanjay Jain here. Sanjay bhai, thanks for the presentation. I have one question. Let's say audit trail is enabled and still, accounting, the accountant of the firm chooses to make a backdated correction, right? He posted some entry, say in February, now he's correcting it, right? So as long as, so far as the audit trail is concerned, he has met that criteria. But as auditors, are we supposed to look and report that? We will have to write that the audit trail has been tampered with. Okay. Well, it's not really with the audit trail in this case, right? The audit trail is still there. The audit trail will show that yes, he's made a No. Modification must not be allowed. Oh. No, well, there is a difference, right? See, audit trail simply says that you have to audit what is happening, and he's auditing. The audit trail is saying that yes, he had made that change. So he's not tampered with the audit trail per se. He's not tampered with the software. He's just made a correction in the entry which happened 3 months ago, right? So, would that be called the tampering of the audit trail? I wouldn't think so, right? Yeah, because it means the configuration was allowed to be changed. No, it means modification was allowed. Well, if the software allows modification, but it still has the audit trail. The software cannot allow modification. Now the software cannot allow modification. Okay, I have another question. In Tally, you can always upload data using Excel to Tally import, right? There are third-party softwares available, right? So if we find that we made many mistakes, right, and then making a lot of journal entries is again going to be very questionable. Wouldn't people? No, that's not an issue. No, that's not an issue. There could be 1,000 journal entries also. That's fine. My point was, the whole purpose of this is to, not allow surplus elements to misuse and, misappropriate the accounting system and keep their books, forge the books and all that. But I don't see this being controlled. I think a lot of people will be spending a lot of time in trying to meet the requirements, but the ones who wants to get away can still get away by rewriting the entire Tally. Well, till the time the government creates a user ID, just like Aadhaar, that, who has used how many software. So I'm saying, why Tally? Why not SAP? From Tally, they can shift to SAP. SAP, they can shift to Oracle. So as long as it is not mandated by the government that a company for a year can use only one software and that to maintain only one book of account, this loophole will continue. Okay, thanks. Sir, as auditors, then if out of say 365 days, whatever will be the working days, 300 days, auditor will always test these on a sample basis, right? Sample. No, he will also check the IT controls, Mohit bhai. IT controls will reveal. Okay. And then he will have the edit log. Okay. So Kunalji and Vandanaji, when you are dealing with the software, please do let us know how do we detect if there is any change in controls, as what Sanjeevji was saying. Yeah, Mr. Nivetia, you have one question. Any question? Yes, I have one question. Yeah, please.
Sir, so can we say that like after 2 or 3 years, like we are using one accounting software, maybe any kind of like Tally or Zoho or maybe some other software. But if we want to shift to another accounting software, so we have to like company has to bring all their audit log from old accounting software to new accounting software. No, you can maintain two. For 2 years, this is software X, and for remaining 6 years, software Y. For example, software X is going out of India and they are exit. Like recent days, we can see QuickBooks That's is okay. like moving out of India. Then you have to audit the so then you they have to are not audit the providing it. migration. You must ensure that you maintain the backup for 8 years. Okay. Okay. Sir, one point you said on backup on records kept in server. If somebody maintains accounts on server, and The backup has to be in India on a daily basis. On a daily basis, even if the server is in India. नहीं, वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा. I think वो बाहर के लिए है. बाहर के लिए. वो जो बाहर वालों के लिए है. बाहर वालों के लिए. हाँ. शायद मुझे देखना पड़ेगा कि दोबारा प्रेजेंटेशन को. आपने यही बोला था. अगर आउटसाइड इंडिया सर्वर है, then ये. Okay. So, I think there are so many persons who have raised hand. I think Ravi Joshi ji, you want to she asked unmute, please. Yes. No, I think he has raised his hand by mistake because his hands. Hello. Okay. Hello. Chandra ji. Yeah. Can I audible, sir? Please ask. Yes, you're audible. Yes, sir. I just wanted to know that I am using Tally Edit Log, and there is a feature of effective date. Is effective date is equivalent to the value date? Yeah. Yes. Yeah. Okay. And what about the closing entries, sir? After बता दिया finalizing the. सर, बता दिया, डाल दो ना आप. Effective date हो सकती है. Okay. Effective date डाल के. Current date. Okay. Thank you, sir. Hello. Yes, Chandra ji. Hello, sir. Please ask. Yes, sir. Hello. Just I have purchased investment on 1st of April and I'm receiving bill on 4th of April. So how should I entry? I can make entry Effective date. 4th of Effective date 1st April. Date of posting 4th April. But we will enter at the 4th of April. Yes. But then in calculation of long term, short term, it may be a problem of effective date, sir. Effective date 1st April डालिए. Okay, sir. Thank you, sir. Regarding bank transaction, cash withdrawal, same effective date. सर कैश विड्रॉल कैसे बैकडेट में हो सकता है ना? हाँ नहीं समझिए, हमने बुक्स में नहीं एंट्री किया, 2 दिन बाद. सर रॉन्ग है. मैं तो नहीं मानूंगा एज एन ऑडिटर. मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि कैश भी बैकडेटेड एंट्री किया. आई नॉट एक्सेप्ट उठाया केवल तो. If I only one bank. No. Whatever it is, sir. Cash has to be recorded on the same day. Okay, sir. Why should cash be backdated? But because since I have not maintained till open entry. Sir, I will not accept this argument. I'll say then that's a weak system of accounting. Okay. And sir, I'm saying these are all ways and means of doing fraudulent transaction. As chartered accountants, we must not support these. Okay. Even if bank transaction. Sir, these programs should not become a way and mean of finding the loopholes. No, if it's only bank transaction, then also not. Sir, whatever it is, sir. Whatever it is. Okay. Mohit sir, I think we have some questions in the chat box also. Be, to educate the client. Mohit, by 5:30, I need to close because the next meeting is starting 5:30. Sure, sir. So the best option is to advise the clients to please disable your software for backdated entries. No, they have to. If they don't, they have to qualify. Right. So last question from the floor we can take because. No, we can take 3 questions more. Sir, के पास 5 minutes और है. Sir, what are saying? Data from Form 26 AIS will be updated on quarterly TDS entries. So if you are recording on current date, that is fine. क्या problem है? Yeah. Audit trail is tempered. Should we report date-wise detail? नहीं, आप बोले ना audit trail has been tempered. That's all. That's all. Okay. Anand Paiji, you have some questions? You have raised your hand. Hello? Yeah.
Hello? Yes, please ask question. Please ask. Yeah. I fully agree with the speaker that we must be very careful. See, there may be a possibility that during the course of tax proceedings or ROC proceedings, they may ask for the audit copy of the audit trail. And if the auditor has given a clean report, then we may not be in a position to refuse to give it. Or we cannot say that. Hello? Hello? Please, sir. Please, sir. Yeah, I fully agree with the honorable speaker that we must be very careful in giving the clean report. Tomorrow, there's a possibility that the department or any regulatory authority may ask for the copy of the audit trail. At that point of time, company must be in a position to give. So we must be very careful. Yes, sir. What audit I evidence? think yes. What audit evidence we should have with us for audit trail? We can have some of the samples in our record. I mean, our audit working paper that we tested the system and our observations. Yeah. One, Mr. Deepak, you want to ask something? So good evening, sir. I have a question. If we enter in the receipt entry, in that case, some outstanding will not match with the data's bills. Some case we will adjust in future against the bills. It will consider as a modification. No, just pass an entry in the date in which you are making that adjustment. Don't backdate. What Sanjeev sir is Don't saying? modify an existing entry. Right. Thank you, sir. Sir, in that case, typographical error, punching error रहेगा तो आपको what? Pass a journal entry. See, Vandana ji, rectification is the only answer. Otherwise, thousands of loopholes will be there otherwise. But see, now you are going to go, so I just take 1 minute of yours. In Tally, when we say edit log, we are giving you version 1, version 2. Version 1 में अगर 200 रुपया था, version 2 में उन्होंने 500 rupees किया तो आपको trail मिल रहा है. So accounting trail ढूंढना है, audit trail ढूंढना है या accounts का trail ढूंढना है? That was the question. वो एक ही बात है. It's accounting trail. Basically, accounts में कुछ भी changes हुआ है, so we will showcase to you and we will not allow you to change the trail. मतलब ये इसको audit trail इसलिए बोलते हैं. Excel में अगर आप देखेंगे तो audit trail का feature होता है. वो ये बताता है कि कहाँ से ये figure आई. आप उसको source trace कर सकते हैं. Source trace कर सकते हैं. तो हम जब आपको modification जब आप बोल रहे हो कि कभी क्या से होता है 5262 था तो उसने 5626 लिख दिया तो बाद में जाके उसने अगर change किया and as an auditor when I see the document it is wrong. He should not change it. He should not change it. He should pass a rectification. That will be too tedious and I don't think it is practicable for because I don't agree that this is tedious, Vandana ji. He has to pass a rectification entry. Otherwise, this is a fraud. Human error तो होगा ही है पंचिंग के टाइम पे. तो human error है तो rectification entry है ना पास करने के लिए. ठीक है, that is your stand. Let us not argue. Sir is I'm not arguing. I'm just trying to absorb. No, that is very clear. If the auditor does not qualify, he will be held guilty. Okay. नहीं वो अच्छा हुआ ना सेशन रखने का मतलब ही ये था कि क्लैरिटी आ गई. नहीं देखिए मैंने बार-बार ये कहा हमें स्मॉल बिग के हिसाब से वेज एंड मींस नहीं निकालने चाहिए इस इतने फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म को डिफीट करने के लिए. It is a question of defeating anything, but हमें practically implement करने के लिए. Practically is what? Rectification entries are meant for that. Okay, that's the only solution. Yeah. So sir, what is saying कि उसका purpose ही defeat हो जाएगा. So let us now and bypass what is the law. नहीं तो अच्छी बात बताई ना तो आज का सेशन तो काफी informative रहा और educative रहा हमारे लिए भी. Yeah. It was a rapid fire round, Mohit bhai. I think. When sir who has made this guidance note, if lot of saying in the sense there was always a thought, maybe without reading, that a modification of entry followed by an edit log is fine.
So I think you have cleared the confusion. Even a view was that, even without reading what institute has said, that even deleting an entry and if it has a trail, that is fine. But now what you have said, whatever you are doing, you do it in current date, do not modify, do not delete. Simple. Yeah. Yeah. So can we do audit trail, maintain audit trail in Excel also? Is No, there any you feature can't. such thing? No, there is not to my knowledge. Okay. Thank you. Sir, what a session today. We from the Excellent. News Exchange and all the members present. Hundreds of applause to the WSB chairman for being here today, for making it happen today, to solve all the queries with a firm view that we are chartered accountants, we are professionals, we have to behave like a professionals, and we have to teach the corporates to behave like corporates, not like a sole proprietorship where the things which were being done in the past. We have to change ourselves, and this is the message. The message is very clear and loud from the regulator, the MCA, then the ICI, that we have to change. We professional have to change, and the corporates have to change. So thank you so much, sir. In spite of hurdles, you had made it today. I'm deeply obliged. Thank you so much, and I also request those who will be speaking later on softwares how we have to keep the audit trail. This is one, and second is whether this audit trail can be edited. If edited, how the auditor will find out? That is the questions you please deal with. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Sanjeev ji. Thank you so much. So, Nitesh ji, we will be taking which software first? Abhi kaun pehle dega? Yeah, Vandana ji, Tally software. हाँ, तो Vandana ji, in the light of abhi jo whatever discussion has happened, please explain the audience. Like I also use Tally. So whatever say, what is the concept of value date? How this value date can come? Number one. Number two, he was telling about IT controls. So, and he was saying that 365 days that trail log should be enabled. So how as an auditor can we verify? Number one, what are the test of controls? Number two. Number three, if there are say changes and today is say 11th April, after 31st March 24, I go and verify the records. So I have to see the trail. So in what way those trails will be relevant to me? Next, he has said that modification as well as deletion, both are tempering. So does your software allow both modification and deletion of entries? And assuming it is allowed, how it will appear? Because if there is one entry, is there a trail for each entry with edit log? Is there is a trail for modification? Is there is a trail for deletion? And after the year end, what sort of reports can and how the auditor can fetch reports from your record, from your Tally, कि हमको report निकालना है, and reports in a filtered form. कि what are the modification entry, what are the deletion entries, has in any 365 days उन्होंने बीच में log smartly का भी बंद तो नहीं कर दिया, because it is not possible कि हम 365 का 365 दिन देखें. And I think when we'll taking up the next software also, I think Kunal ji will be taking that. So if all those issues are appropriately addressed. So now over to Vandana ji. So first of all, thank you, Nitesh sir, to giving me an opportunity to come and address this, and also clarifying so many clarity by Sanjeev sir today, the person who has already been instrumental for an implementation guide on the very, very burning issue, and it's a right improvement one can say. And as you said, Mohit sir, very categorically we were believing that हमारे पास modification का version रहेगा, then it is fine with us. But now today's session onwards, we will have to make it publicly benefit, more information to be shared to the public at a large, that the intention of the law is that it should not allow the modification. So, okay, in Tally, we have the controls in place that we only give the operator the right to create the data, and the next layer can have certain, journal entry passing facility, controls in their head. So there will be layers which can be defined. The security controls are already in place. So that is a subject in itself.
Today, let me now share my screen with you. This is today just we came to know. So the previous background I have prepared the PPT. So we will just go to the PPT. So ऑडिट ट्रेल ये नोटिफिकेशन उन्होंने सब बता दिया, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, ये भी हम लोग ने समझ लिया, नोटिफिकेशन भी उन्होंने डिस्कस कर लिया है। इम्पैक्ट में हमें खाली ये देखना है कि ensure the existing software provides or will be able to provide the tally audit trail edit log facility say from the date of 1st April 23 or when you migrated to that software basically, because जिस दिन से आपने ट्रांसफर किया वहीं से एडिट लॉग स्टार्ट होगा, क्योंकि वो सिस्टम डेट के साथ रन होता है। Switch to different software if that is not possible in your software, and CA is supposed to verify the software. And as of now, the question was asked because we don't know the penalty as far as if it is not maintained, what will be the penalties, that MCA is not clarified. So as far as auditor is concerned, it is an additional responsibility cast on the auditors. They have to see the client is also moving to and using the right software, and also they will see that they have to adapt the new way of working. Okay. Now they have also clarified, still once there were questions coming in. So we have made this in our PPT, which are the companies which is covered under this. So limited liability is excluded from as of now maintaining the audit trail. And the way forward, Sanjeev sir said, no sooner or later down the line, after 1 or 2, 3 years, each individual, any accounting, any type of SSC should be maintaining the audit trail. And I think that is what the way forward should be. Now, what we have understood as of now, tracking of each changes made in the transactions, and that is why we said कि अगर transaction एक बार entry हो चुकी है और उसमें modification होता है, तो हमारा software उस changes को हमें highlight करे as the auditor कि on what date who changed, whether the A who was the first person who entered or a B who was the supervisor has modified, or whosoever is modified, the trail is available to the auditor, and what particular field was changed in the particular transaction, that will also be available. Also capture the date when such modification was made. Also ensure that audit trail, that is edit log, cannot be disabled. So that is the inherent feature of the edit log version of the tally that I will be showcasing in just a minute later. Also, audit trail edit log facility should have been operated throughout the year. So in between, you can't switch on and switch off. That is not allowed. It should not be tampered with, and it should be preserved as per the requirement of the record retention. So CA needs to certify if the software used is compliant or not. This is what we have interpreted the notification as such. So now let's say audit trail feature to look for in accounting software. So what they are asking, there should be a date stamp. The audit trail should record the details of actions performed in the system. The accounting software should track all the changes done on the transactions and capture details in the audit log. In simple words, the software should track and log changes right from the inception to the alteration to the deletion of the transaction. Edit log feature to be enabled all the time. As long as books of accounts are valid and the companies keep them, the audit log should be maintained for the duration of the validity of the records. And they were asking that IT, technical log versus audit log. And audit log should not be confused or interchanged with the software. Accounting software should have a separate log for the software issues, and dedicated audit trail should be available. So be aware there is a difference when you choose accounting software. कि IT control है या accounting control है, वो दोनों को आपको समझ के लेना है. Then additionally, you may also ask for कि the accounting software should capture username details, the one who is doing the data entry. So there is a creation and a modification. Maker checker concept should be there. There is a version difference, as Mohit sir and we just now discussed. The accounting software is allowing me which was the previous version and the next version. And there is a sequential order, the audit trail to capture the details of actions performed by its system in a chronological order by date and time. So now हमने बोला था tally prime edit log है तो audit trail easy है. Now what you need to do when you want to move to edit log, all you need to is upgrade to tally prime edit log. Will take care, rest of the things can be taken care. The product will ensure you are fully compliant from the day one.
You don't need to do anything to be changing. Continue operating the product as you are, because already Tele Prime had come in the year 2020, November 20. So now 21, 22, and we are in 23. So now people always keep on asking whether Tele Prime जो non corporate SSC के लिए है वो और मेरा एडिट लॉग वाला टैली, तो दोनों अलग अलग EXE है और दोनों आपके सेम सिस्टम में रन कर सकते हैं. एंड थर्ड, आपका ERP9 में भी बहुत सारे पब्लिक है जिन्होंने लाइसेंस अपग्रेड नहीं किया है टैली का. So ERP9 also for that non-corporate SSC will also run. So as at given point of time, you can have a 3 EXE running in the same system. Okay. So you can have flexibility to operate 3 of the tally versions. Okay. Now upgrade is free. मतलब edit log अभी ही आप download कर सकते हैं, provided you have a valid TSS subscription. Tally software license subscription is on. Now from my side, what is the prerequisite? आपको 4 GB RAM is important. You need to have 64-bit operating system, and आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit होना चाहिए और 4 GB मिनिमम होना चाहिए तभी. और मेरे हिसाब से 4 GB तो टैली प्राइम के लिए हमने बोला था. अब जब आप एडिट लॉग अपना स्टार्ट करते हो, बिकॉज ईच ट्रांजैक्शन देयर विल बी एडिट लॉग, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन, मिनिमम 8 GB रैम इज इंपॉर्टेंट. और आपका बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड है, पर यूजर आपका 2 GB रैम होना चाहिए. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 यूजर्स आर यूजिंग द मेन सर्वर से सेम सॉफ्टवेयर से डेटा को फेच कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा, यूज द हायर वर्जन ऑफ रैम सो दैट कंफर्ट ऑफ वर्किंग विल बी अवेलेबल टू यू. नाउ लेट मी गो टेक यू थ्रू द एक्चुअल हाउ टैली यू कैन इंस्टॉल. करेक्ट? I'll take you to the Tally Solutions website. You need to go here and just check for yourself. यहाँ पे डाउनलोड में जब आप क्लिक करते हो टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे, there is a Tally Prime release 2.1 and Tally Prime edit log release. So this is for the MCA compliance. Edit log is activated. Now, what is the difference between two of this Tally? In the Tally Prime release 2.1, edit log feature is also there, but it can be enabled, disabled. And in edit log version, you won't be able to disable. So that is what is the MCA requirement. And here also, see, Tally has mentioned supports Windows 7 or later 64-bit operating system. So, and here you can click to know what are the hardware requirement is required for to enable the software. After this downloading the exe, what will happen? There will be two Tally Prime. See, one is with edit log and one is normal Tally Prime. So as an auditor, when data comes, they generally, people send you the Tally ka zip file or whatever they are mailing you the data. So you will be likely to open the data. So suppose के I want to open this data, मेरा path लेके अगर मैं normal Tally में जाती हूँ, आप देख सकते हो ये छोटा सा आइकन है Tally का, तो यहाँ पे EL नहीं है और यहाँ पे EL है. That is the difference we have to understand. And suppose के मैं Alt F3 करके यहाँ पे specify path में वो जो मैंने path select करके डाला, enter किया. So यहाँ पे migration required. The question of Mohit was that whether the data is from which version. So अगर वो Tally Prime version भी है लेकिन edit log version है और हम सादे Tally Prime में open करते हैं, I will just click for the audience to understand. Of course. Because अगर मैं edit log में खोलूंगी तो वहां पे तो वो सीधा खुल जाएगा. Just give me a second.
अगर हम किसी और वर्जन को किसी और वर्जन में खोल रहे हैं तो वो हमें समझ में आना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू पीपल. मैंने कुछ कंपनी लोड करके रखी है इसलिए वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आती है. स्पेसिफाई पाथ. अगर मुझे पाथ नहीं पता है तो मैं सिलेक्ट फ्रॉम द ड्राइव भी कर सकती हूँ मेरे हिसाब से जाके. आई कैन जस्ट ट्रैवल थ्रू दिस फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू, और जहां पे मेरा पाथ है वहां पे हम लोग जाके उसको निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे माइग्रेशन रिक्वायर्ड पे आप जैसे ही एंटर करोगे, आई होप इट गिव्स मी समथिंग, सम मैसेज. मैंने सुबह उसका स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, लेकिन उसमें वो लिख के आता है कि इट इज एडिट लॉग वाला आपका टैली का वर्जन है, और आप उसको माइग्रेट करोगे तो वो एडिट लॉग डिसेबल हो जाएगा. मतलब चालू रहेगा, लेकिन there will be a log that you have switched over from the edit log version to this version. Understood? So that is what the message it will throw to you whenever you are going to a normal tally plan. And now here, suppose Alt F1, I will shut the company. And here, see, there is no migration required because it is edit log version company. I press enter. Security control के बिना वो edit log का कोई मतलब नहीं है, so that you have to enable always. Now first of all, auditor when go and check Alt K करके उनको देखना है यहाँ पे edit log, और यहाँ पे कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टैली प्राइम 1 अक्टूबर को किया था. कभी किया था वो टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ आता है. सो दैट इज व्हाट यू विल एबल टू ट्रैक डाउन. देन द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि हम कैसे उसके मास्टर्स को चेक करेंगे कि वो ऑल्टर हुआ है कि नहीं. तो हम एक एग्जांपल लेके बता देंगे आपको. अब उन्होंने तो बोल दिया कि मुझे ऑल्टर करना ही नहीं है, बट सपोज के देयर इज समथिंग कॉल्ड एयरटेल मुंबई. आज ही मैं जब देख रही थी तो ऑल्ट क्यू इज अ फीचर by which you will come to know if it is previous record and if there is alterations. Mohit sir, Naveen, I am audible, no? Everyone is there? Yes, audible. Yeah. Yes, ma'am, you are audible. And I think how much time I have with me now? 15 minutes और है मेरे पास. हाँ ma'am, comfortably. Yes. So here see, आप देख सकते हो कि पहले वर्जन 1 में उसका नाम एयरटेल था और बाद में उसका नाम चेंज हो गया. तो पहले का अगर वो पुराना वर्जन है, मतलब हमने सिर्फ डेटा आज ही पेस्ट किया मेरे वहां पे, तो उसका दूसरा पुराना टाइम स्टैम्प नहीं है. बट आज मैं जब उसमें काम कर रही हूँ तो टाइम स्टैम्प लगना चालू हो जाता है. तो जो भी डेटा अभी हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें टाइम स्टैम्प अटैच होते जाएगा उसके साथ. जैसे कि अभी इसी के अंदर अगर हम जाके कुछ चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई विल डू सम चेंजेस इन F12 कॉन्फ़िगरेशन लाइक चेक फॉर क्रेडिट डेज. अगर ये भी मैं कुछ चेंजेस करती हूँ तो वो वाला भी अलग से वर्जन में नोटिफाई हो जाएगा कि इन्होंने देखो कुछ अल्टर किया है मास्टर्स के अंदर जाके, और क्या चेंज किया है. इस क्रेडिट डेज चेक ऑन वैल्यू वर्जन 2 में कुछ नहीं था और यहाँ पे यस आ गया. यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में मैंने शो अल्टर्ड वैल्यूज ओनली रखा है. अगर ये नो करेंगे तो आपको पूरा दिखेगा, पूरा उसका ट्रेल है कि कहाँ पे क्या हुआ है, और रेड में वो मार्क होता है whatever field has been changed, basically that is highlighted by the time. तो आप F12 में जाके सिर्फ आपको एज ऑडिटर खाली मॉडिफाइड देखना है, तो आप उसको ड्रिल डाउन करके छोटा सा विंडो भी कर सकते हैं अपने लिए, और वो टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पे दिखता है. अभी ये हो गया. अब आप बोलोगे हम एक एक थोड़ी ना लेजर जाके देखेंगे. सबका क्वेश्चन यही रहेगा कि भैया ये तो टीडीएस हो जाएगा, 1000 लेजर्स रहेंगे तो हम एक साथ में वन गो में कैसे हमें समझेगा. तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हमारे रहते हैं उसमें हम अगर लेजर्स में जाएंगे तो ये पूरे सब जो 38 ग्रुप्स और 146 लेजर्स है, यहाँ पे बटन है बेसिस ऑफ वैल्यूज. कंट्रोल बी आपको प्रेस करना है. वहां पे देखो ऑल लेजर्स अल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड आर रिटर्न. सो आई प्रेस एंटर. I'll come to know altered ledgers. So as an auditor, I am interested in watching the altered ledgers, and then I say Control A and include deleted ledgers. That also I want to showcase. So I will also say yes over there. These what I want to say, when I press enter, it will become no. I press enter, it will become yes. So it is just a toggle key. कंट्रोल ए करने के बाद जो जो चेंजेस हुए हैं जितने लेजर्स में, so out of 148 only 7 ledgers were altered. So that immediate trail is available to you as far as masters are concerned. So I hope, and then once you click on to advertisement expense and then Alt Q,
you will come to know when and what are the changes have been taken place in that particular report. So आप वर्जन वाइज कंपैरिजन देख सकते हैं कि पहले क्या था. तो ये जस्ट ट्रायल बनाया था, डेमो वर्जन. सो पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस था, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पेरेंट का ग्रुप का हेडिंग चेंज किया गया था. सो दैट इज हाउ इट इज. लॉग हैज बीन kept and visible to the auditor कि what changes have been taken place. So this is a mastermind creations. I hope you could understand. चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको जाना है, बेसिस ऑफ वैल्यू में जाना है, और वहां पे आपको अल्टर्ड लेजर्स देख सकते हैं. और या तो आपको वहां एंटर मारोगे तो ऑल लेजर्स, नॉन अल्टर्ड, 3 टाइप के लेजर्स आपको मिल सकते हैं. एंड whichever स्क्रीन ऑफ टैली ऊपर एक्सपोर्ट लिखा दिखेगा तो वो रिपोर्ट फिर एक्सपोर्ट हो सकता है एक्सेल फॉर द वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ लेट अस गो टू ट्रांजैक्शन लेवल. सो लेट्स गो टू डे बुक एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है, अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो कैसे हमें पता चलेगा. व्हेन यू प्रेस एंटर एंड अगेन द सेम शॉर्टकट की इज ऑल्ट क्यू, it will show me that the voucher was created on 28th of March and altered by me today around 1:24 when I was just trying to see. So what changes have taken place is this is some descriptions has been altered. So आप जितना जितना उसके अंदर करेक्शंस करते जाएंगे, आप अगर नरेशन में जाके कुछ लिखना चाहो, whatever you do the changes that has been taken care by the tally. And मतलब in any case it was required that time कि आपको बताना है कि क्या चेंजेस टेक प्लेस हो रहे हैं. सो नरेशन में यहाँ पे वैल्यू आई है, दैट्स व्हाट इट इज हाईलाइटिंग. सो आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग के एडिट लॉग में हमें कैसे और क्या करना है, कैसे समझना है. वन पॉइंट वो थोड़ा आप क्लैरिफाई कर दिए. अगर मुझे 12 महीने में देखना है, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन तो आपने बता दिया, जो ट्रांजैक्शंस में एडिट हुआ है 12 महीना का एक साथ देखना है तो वो कैसे देखेंगे? वो थोड़ा सा हम लोग उस पर काम कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. वो ट्रांजैक्शन लेवल पे है, तो उसमें अभी अगर मैं ऑडिट स्टेटिस्टिक्स में जाती हूँ, लेट मी जस्ट चेक. ये जो ऑडिट स्टेटिस्टिक्स वाउचर टाइप है, और आपका जो क्वेश्चन था, अगर इफ आई कैन आंसर 1/4/20 to 31st मार्च, और इसके अंदर डेमो डेटा में ना करेक्शंस किया होगा ना, तभी आता है ना कि ऑल्टर्ड हुआ. तो यहाँ पे एंटर्ड है, ऑल्टर्ड नहीं है. ऐसे अपना ना ये ऑडिट ट्रेल तो जब से टैली आया ना, मतलब 15-20 साल से है. ये कैसे था, मतलब अगर आप लोग यहाँ पे ऑल्टर का, यहाँ पे ऑल्टर में अगर आप देखोगे एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स यस है ना, ये तो ERP 9 में भी ये फीचर है. तो ये अगर हमने किसी ने एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स किया ना, तो उसमें एंट्री की वो हमें दिखता है डिस्प्ले स्टेटमेंट. उसके बाद देखो यहाँ पे टैली ऑडिट, दिस इज अ सेपरेट ऑडिट फैसिलिटी अवेलेबल, फीचर अवेलेबल, वेयर वाउचर टाइप्स में कितने डाले हैं, किसने चेंज किया है, वो पहले से है टैली के अंदर. मतलब सिक्योरिटी वाइज आपने अगर रखे हैं तो आपको यूजर वाइज ए ने कितना एंट्री किया, किसने चेंज किया, वो सब ये लिस्ट पहले से ही होता है. ओके, सो वन गो वन कैन चेक दैट कि कहाँ पर है. और ये अगर ये आ ही रहा है, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं आपके हिसाब से जो आपने बताया ना अभी. तो वो वैल्यू डेट आप बताएं. तो मैं अभी बता देती हूँ. पहले मुझे जरा एक ये हो गया आपका, ये आपने वर्जन समझ लिया कि एबिलिटी टू ट्रैक मास्टर एज वेल एज लेजर्स, एंड ये चेंजेस वो आपको डिफरेंस बिटवीन एडिट लॉग वर्जन्स बताएंगे. डिलीटेड वाउचर्स, कैंसिल ट्रांजैक्शंस, अगर हम कुछ कैंसिल करते हैं तो ये देखो शो, जो आपका क्वेश्चन था ना सर डे बुक में, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ अल्टर्ड वाउचर्स दिख रहा है. सो दैट आई हैव टू शो करेक्ट, अल्टर्ड, डिलीटेड, कैंसिल ट्रांजैक्शन. कोई आई हैव टू शो यू ना, जस्ट अ सेकंड. डे बुक में आप चले गए, ऑल्ट F2, पूरा साल आपने ले लिया, और उसके बाद हमारा यही बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके शो रिपोर्ट फॉर ऑल वाउचर्स, अल्टर्ड, नॉन अल्टर्ड. तो हम सिर्फ अल्टर्ड वाउचर्स जो आपकी क्वेरी थी सर, ठीक है ना, तो और इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स, अगर कुछ हुआ होगा डिलीट तो वो दिखाई देगा आपको. सो दीज आर दी वाउचर्स. सो दिस विल ड्रिल डाउन टू ओनली द वाउचर्स व्हिच हैज टेकन ऑल्टरेशन हैज टेकन प्लेस. ओके, और डिलीटेड में भी शायद वो दिखाता है लेकिन रिस्टोर नहीं होगा, वो तो कंफर्म है, वो रिस्टोर होना नहीं है. सपोज अभी जो हम जिसमें काम कर रहे थे उसको अगर हम डिलीट, फॉर एग्जांपल
और फिर Alt F2 करके 11 फरवरी 21 करेंगे तो वो नीचे डिलीटेड वाउचर्स दिखेगा। तो ये देखो क्रिएटेड था, अल्टर्ड और नाउ इट इज डिलीटेड एट दिस मोमेंट। एंड क्या था वाउचर के अंदर वो इंफॉर्मेशन दिखेगी, इट कांट बी रिस्टोर्ड पर्सन। सो दिस ट्रेल इज अवेलेबल कि क्या हुआ था उस बेसिकली। अंडरस्टूड? ये था what you are trying to say कि जो deleted voucher था उसका कंटेंट आ जाएगा। हाँ, लास्ट वर्जन आपको यहाँ पे दिख ही रहा है ना, पहले क्या था वो भी दिखेगा। वो जितना जहां पे आपने चेंजेस किया है, अगर आपको खाली ये है तो ये पूरा दिखेगा सर। यू कैन सो पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, फिर लास्ट वर्जन में क्या हुआ, और देन इट इज डिलीटेड एट, अभी हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे, वी हैव डिलीटेड एट व्हाट टाइम, टाइम स्टैम्प के साथ आ जाता है। सो आई होप योर क्वेरी इज रिजॉल्व। डे बुक में जाके आपको कंट्रोल बी बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाना है। ओके ये पूरा का एक साथ रिपोर्ट का ऑप्शन है कि हम पूरा 12 महीने का एक रिपोर्ट निकाल के कोई पीडीएफ या पीआरएन फाइल में सेव कर ले। हाँ, सो ये अभी मैं आपके एफएक्यू ले लेती हूँ, मैंने खुद ही ड्राफ्ट किया है। सो आई होप दैट कैन सफाइज द पार्टिसिपेंट क्वेश्चन, और इसके बाद भी कुछ रह जाएगा तो आप पूछ लेना। So will the user be able to disable the edit log capability in the Tally Prime edit log product? I again repeat, edit log। आपको दोनों के बीच में समझना ये है कि यहाँ पे Tally Prime Gold लिखा है और इसके अंदर यहाँ पे edit log लिखा है। So these are the two different version, okay? और क्वेश्चन ये था कि whether, so sir, MCA notification clearly states that an accounting software with audit trail capability should not have any option to disable it. Therefore, it is an inbuilt capability available। आपको चाहिए तो मैं दिखा देती हूँ कैसे वो डिसेबल एनेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं जाती हूँ, अगर चल गया तो हाँ, दिस आई वांटेड टू शो यू एवरीवन। सी माइग्रेट, कैन यू सी द स्क्रीन? माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा compatible with this release. The edit log feature will remain enabled for the company and a log will be created to record the migration from Tally Prime edit log to Tally Prime। So वो बोल रहा है कि आपका ये माइग्रेट हो रहा है, और फिर मैं उसको बैकअप, मुझे अगर नहीं लेना है तो मैं नो करके कंट्रोल ए करूंगी, और लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ वो कंपनी ओपन है उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट हैवॉक। ओके, और फिर आप माइग्रेट कर दो उसको। सो यहाँ पे ऑल्ट के कंपनी, यहाँ पे जो अल्टरेशन है ना, यहाँ पे F12 में वो फीचर्स है एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, यस। यहाँ जाके आपको सादा वाला टैली प्राइम में भी आप ये फीचर ऑलरेडी 2.1 रिलीज के बाद है तो आप यूज कर सकते हो, बट उसमें यहाँ पे है वो फीचर। सो दैट्स व्हाई आई कैन गो एंड आई कैन डिसेबल इट ना। यहाँ पे जहाँ पे मेरे को F12 है, इसको मैम यस करने के बाद में नो भी कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? यस यस यस, यहाँ पे नो कर सकते हैं। देखो ना, मैंने किया ना अभी आपके सामने। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। इन नॉर्मल टैली प्राइम फीचर इज अवेलेबल सिंस लास्ट 1.5 years, बट दैट फीचर हमने वो बोलते ना एग्जांपल्स के लिए दिया, लोगों को यूज टू होने के लिए। लेकिन अगर हम न्यू वाले टैली पर मूव कर जाते हैं, लाइक वी शिफ्ट टू न्यू टैली, देन आल्सो अगेन वी कैन नहीं, यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो वो जो बोलते ना उनका फेल हो जाएगा ना जो वो मांग रहे हैं हमसे। अंडरस्टूड? सो हियर वंस यू आर माइग्रेटेड यू कैन नॉट कम बैक। अब मुझे सिर्फ आपके साथ यही देखना था एडिट लॉग में। देखो उन्होंने लिखा है कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टैली प्राइम एंड नाउ कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टैली प्राइम एडिट लॉग टू दिस। तो ये लोग यहाँ पे मेंटेन इन्होंने भी किया है क्योंकि हमने मूव किया है वहां से यहाँ पे। बट मैंने यहाँ पे जाके वापस ये जो अल्टरेशन है ना, यहाँ पे आपने ऑन किया तो वो फीचर चलता रहेगा, तो लॉग उसके साथ रहेगा, लेकिन लॉग में वो लिखा रहेगा कि ये सादे वाले टैली प्राइम में गया था। अंडरस्टूड? बट आई विल नॉट सजेस्ट। ये क्या है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी में भी अभी से आपको आदत डालनी है कि नो सुनर और लेटर ऑडिट आने वाला है, और ये ऑडिटर के लिए भी फायदेमंद रहेगा कि ट्रेल तो मिलेगी कि मतलब वो लोग सादे वाले अकाउंट्स में भी कितने चेंजेस हो रहे हैं वो हम एज ऑडिटर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अवर एडिट लॉग। कोई क्वेश्चन था ना वहां पे अपना? या कि वो पूरा 12 महीना का एडिट लॉग का एक रिपोर्ट। हाँ, तो वो तो मैंने जैसे डे बुक एक साथ में दिखा दी, अब उसमें से आप सैंपल ले लो। बाकी ट्रांजैक्शन वाइज वो अभी नेक्स्ट उसमें आ रहा है क्वेश्चन
Can the user compare selected versions? The user will be able to compare the selected version by plus and minus sign on the keyboard. Can we print the edit log information of a transaction or a master? Currently, the product is designed considering the MCA notification. However, post launch, we will closely monitor and feedback. Abhi jo market ka aayega ya, even after listening to Sanjeev sir, we need to have an immediate meeting and understand what is to be done, in the future release. Can edit log viewing access be controlled through security? Currently, any user having access to view or alter transactions can also access the edit log information. I repeat, any user having access to view or alter transaction can also access the edit log information. However, it is fair to have restriction on viewing edit log information. We will be looking in the future release. Can we track all the edit log information in a single report? This is the question you are asking, right? Yes. So currently our complete focus is on making you compliant with the law first. All the edit logs will be captured and maintained at the transaction level. However, to simplify you to identify those transactions that have edit logs, we have provided an option to filter the altered transaction in daybook and ledger voucher reports. Once the filter is applied, you will get the list of all altered transactions, including deleted ones. You can drill down. So यानी कि वो हमको अभी तो drill down नहीं करना है to see the transaction wise. बाद में maybe on the next release we will be providing you the export of all the transaction. थोड़ा time लगेगा क्योंकि अंदर भी इतने सारे fields है ना, उसका हमें report निकालना है basically. And that too, as the Sanjeev sir said, we will be going to the sample only ना. अगर altered में भी 500 transaction altered किए तो हम सब थोड़ी ना देखते बैठेंगे. Will the edit log associated with the transactions and master can be exchanged via sync or import? ये अभी जो हम कर रहे थे, edit log associated with the transaction master can be exchanged via sync or import. The edit log data will not get exchanged via sync or import. The edit log will be logged only for an on-premise data. User may sync, import the data to Tally from any third-party software. So Tally cannot provide a reliable edit log for such master transaction in Tally. तो कोई बीच में डिस्कशन में बोल भी रहा था ना कि जो हम एक्सेल से इंटीग्रेशन भी है, काफी सारे TDLs अवेलेबल है कि एक्सेल से आप डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो, तो तभी वहां पे लोग नहीं है. तो once the data transaction is entered in the Tally, timestamp will be affixed to it basically. So what all information, तो मतलब अभी जैसे मेरा दिमाग बोल रहा है, my mind says, अगर मैंने बैंक रिकंसिलिएशन के लिए वो ट्रांजैक्शंस मैं बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करती हूँ, तो इंपोर्ट करके वो तो आके जाएगा मेरे HDFC बैंक में दिखेगा मुझे. उसके बाद मैं पहली ट्रांजैक्शन करूंगी तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी टेक्निकली, तो उसका लॉग बनेगा. ऐसा मेरा समझ आ रहा है मेरे को, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. एंड TDL से अगर वाउचर्स आते हैं तो वो पूरे मंथ के वाउचर्स हमने एक साथ में इंपोर्ट किए, तो वो आज की तारीख में ही इंपोर्ट हुआ तो आज का ही टाइम स्टैम्प लगेगा. दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग. So what all information get captured in edit log? Version history, वो तो हमने actually live देख लिया. Various activity types, master, voucher, company data level, created, altered, deleted, resaved, cancelled, optional, import, migrated, sync, split, repair will be tracked. So ये सब जो आ रहे हैं वो उधर दिखेंगे. बट मेरा जो माइंड बोल रहा है कि जब मैं इंपोर्ट करूंगी आज TDL से डेटा, हम क्या करते हैं साल मंथ खत्म होता है फिर एक्सेल से शायद इंपोर्ट करते हैं परचेज रजिस्टर भी हो. लेकिन होल्ड ऑन, जो अपना टैली रिलीज 3 मई में आने वाला है उसमें GST 2B का डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी आ रहा है टैली में, तो उसका भी कैसे करेंगे, वो डायरेक्ट 2B रिकंसिलिएशन भी आने वाला है. तो ट्रांजैक्शन तो हमने पहले एंट्री करनी ही करनी है. और जो किसी का कभी से क्वेश्चन था कि मैम शो अस दी वैल्यू डेट, तो अगर हम वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे इफेक्टिव डेट कॉन्सेप्ट पहले तो आपको एनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इफेक्टिव डेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो वो वहां पे नहीं आएगा. इफेक्टिव डेट ऑफ पोस्टिंग द वाउचर, जो उन्होंने भी बोला कि अगर मेरा 4 तारीख को कुछ हुआ तो दैट आई शुड बी एबल टू गेज इट, सो इफेक्टिव डेट के लिए Alt G वाउचर टाइप, अल्टर मास्टर, Alt G अल्टर मास्टर वाउचर टाइप. यहाँ पे अगर आपका जो भी सेल्स तो हम ज्यादा करके चेंज नहीं करते कभी भी, परचेज थोड़ा आगे पीछे होता है क्योंकि एक्सपेंस वाउचर्स आगे पीछे आते हैं.
तो यहाँ आप समझ लो टैली के अंदर जितने भी वाउचर टाइप है उसमें यहाँ पे यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स है, वो आपको एनेबल करना। और जब आप एडिट लॉग में मूव होगे तो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग विल बी ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड रहेगा, विच इज बेटर फॉर यू टू हैव अ ट्रैकिंग आल्सो। सो दैट इज दी एडवाइस। यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर अगर यस करेंगे यहाँ पे और इसको हमने परचेज में ओके किया, कंट्रोल ए किया, और अगर हम जाके F9 परचेज में जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल किया, और यहाँ पे देखो अभी इफेक्टिव डेट आ गया। सो यहाँ पे आपको F2 करके वो डेट ऑफ वाउचर से 11 एंड इफेक्टिव डेट इज से 1 फरवरी का वाउचर है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट दैट वाज अ क्वेश्चन रेज्ड। Let's go to the next. What will happen to the existing edit log data once we disable the edit log features in local tally prime? It will be retained, however, the log will not be created for the time it was kept disabled. जैसे मैंने अभी बोला ना, I moved that company to the local normal tally prime. तो जिस दिन आपने शिफ्ट किया वो टाइम स्टैम्प लग गया, उसके बाद भी अगर एडिट लॉग आप कंटिन्यू करते हो तो लॉग तो वहां पे मेंटेन करेगा, बट डिसेबल्ड हो गया तो ऑब्वियसली टैली कैन नॉट कीप एनीथिंग। And however, once you re-edit, the earlier logs will be shown to the user. तो पुराना जो log उनके क्या बोलते हैं मेमोरी में रहेगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा। Will the same license work for both product Tally Prime and Tally Prime Edit Log? Yes, that I initially said coexistence. Even I said one step ahead, ERP9 भी चलेगा आपका इसी सिस्टम में, don't worry. Can the same data be allowed to access simultaneously by two different products? I think danger, मैंने अभी खुद कंपनी को शट डाउन किया था. Let me see what is the answer. No, so I was right. So as Tally Prime and Tally Prime Edit Log are different products, user will not be able to access same data simultaneously. If the user tries to do it, it will ask user to migrate the data to make it compatible to their respective version. So अगर हम एडिट लॉग में चले जाते तो वो हमको प्रॉम्प्ट करता कि भैया आप पुराने वर्जन में जाइए, क्योंकि वो प्राइम में अभी माइग्रेट हो चुका है डेटा. So the businesses for whom the Ministry of Corporate Affairs Audit Trail rules came into effect, our recommendation is to use Tally Prime Edit Log Release 2.1 only going forward to ensure you are compliant with Audit Trail related compliance requirement. Will the edit log data be backed up and restored? Yes, it will be backed up and restored along with the entire data. So if you want to shift to a new system, मतलब कभी कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो आपका टैली का जो बैकअप रहेगा वो आपका अगर क्लाउड पे है और आपने पेन ड्राइव में या कहीं पे भी अदर सिस्टम या रिकवरी के बाद भी आता है तो दो डेटा का जो लॉग है वो नेक्स्ट उसमें आपके मशीन में चला जाएगा, तो मिलेगा आपको. So the same corollary, अगर हम ऑडिटर को भी हमारा टेली डेटा जिप करके भेजेगा और वो अपने एडिट लॉग में खोलेगा, उसके वहां भी एडिट लॉग वर्जन रहेगा तो उसको भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगी. Can edit log be viewed from browser or mobile reports? No, the current scope is restricted to edit log availability on the computer system only. Okay? क्योंकि टैली के जितने भी रिपोर्ट्स है वो अब आप मोबाइल पे भी और ब्राउजर पे भी देख सकते हो विदाउट हैविंग टैली इन प्लेस. ओके, सब्जेक्ट टू मेन सर्वर में टैली चालू होना चाहिए और आपको अथॉरिटी होनी चाहिए टू व्यू द रिपोर्ट्स ऑन अ ब्राउजर. Will Tally Prime Edit Log will be available on Tally Prime powered by AWS? Yes, it will be available. Fantastic. Will Tally Prime server serve both the product? Yes, it will work for both the product. However, please ensure to upgrade to latest release of on Tally Prime server. Will modification done in the field added through customization in voucher and master be treated as altered? Yes, it will be considered as an alteration and captured in edit log with the TDL names used in the customization. The way they say it ना कि बाहर से कुछ भी अंदर आ रहा है तभी वो नया है या ऑल्टर हुआ है या उस टाइम का स्टैम्प लगेगा. That is a normal logic says. I think as far as the time was allotted to me was 20-25 minutes. Any questions? Let us take us. If I am able to answer, I will be trying to answer it out. Over to you. Yeah. So very nicely deliberated, Vandana ji. So if anybody has any questions, I think many of the questions which we are discussing during the course of deliberation with Sanjeev ji, you have tried and answered all the questions. So अगर और कोई questions हैं तो we are happy to take. Yeah. Sir, I think एक question है अपने chat में. In case where stock records are not maintained by the SSC
Can the SSC enter the closing stock value on 31st March or 1st April? So that is a point for Sanjeev ji. That was a point for Sanjeev. So, Yes. so ये point to Vandana ji will not be able to say. Any more on tally? So, Mr. Nivetia, you have raised your hands. Sir, if you have purchased a stock for 2 years back, we can put the date 2 years back. कैसे prior period items है ना? Hello. Just a second. We look at it. Yeah, Ravi ji, Mr. Ravi Sahai, your question. Hello. Hello. Yeah, Mr. Ravi. Yes, sir. Am I audible? Yes. हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, अगर मैं कोई कंपनी आगे पूछती है जो कौन सा टैली प्राइम हमको यूज करना चाहिए, एडिट लॉग या फिर प्लेन, तो मैं क्या उसको आंसर करूँ? आप अपने हिसाब से टैली प्राइम तो यूज कर ही सकते हो, उस पे एडिट लॉग फीचर एनेबल डिसेबल आपके हाथ में है, और एमसीए कंप्लाइंट कंपनी को तो एडिट लॉग वाला वर्जन ही यूज करना है। आई रिपीट, देयर आर 2 EXE अवेलेबल। और एक बार फिर से मैं आपको मेरी स्क्रीन दिखा देती हूँ और थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप जब भी जाते हो तो यहाँ पे ये देखो EL करके लिख रहा है, EL दिख रहा है आप लोगों को, और ये टैली प्राइम है, दोनों अलग है। एडिट लॉग का अलग से एक वर्जन आता है, और मेरे पास टैली ERP 9 का भी है कि नहीं? हाँ, ये रहा, देखो उसी के ऊपर है टैली ERP 9। कैन वी सी ERP 9? हाँ, तो ERP 9। और किसी ने अभी जस्ट पूछा था कि ERP 9 में ऑडिट ट्रेल है कि नहीं। अब मेरे पास पुराना डेटा भी होगा कि नहीं पता नहीं, बट फॉर दिस आई कैन company. But then, madam, even if you show this, what MCA says that the edit log cannot be disabled, but in the two software it can be disabled. तो आदमी को तो ये EL वाला ही लेना पड़ेगा ना? हाँ, मतलब लेना पड़ेगा, मतलब आपका जो नॉर्मल टैली है ना, उसी में आपको खाली साइट पे जाके डाउनलोड करना है ये EXE, बस। आपको कुछ खरीदना नहीं है। What I'm trying to say is correct. So what I'm saying कि only after it is enabled, which cannot be disabled, then only that will be proper as per MCA. हाँ, बट उन्होंने क्या बोला, मेरे नॉर्मल जो भी बंदे उनको मैं क्या सजेस्ट करूं, तो इसके लिए बोला नॉर्मल को तो अभी तक मैंडेटरी हुआ नहीं है। जो आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके लिए आपको एडिट लॉग वाला वर्जन यूज करना है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी है टैली ने, चॉइस इज योर्स। आप सभी कंपनी एडिट लॉग में खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Got it. यूजर प्रीरोगेटिव टू डिसाइड। So आपका एक ही सॉफ्टवेयर में, एक ही टैली प्राइम में कुछ हो सकता है जो एडिट लॉग के साथ है और कुछ हो सकता है जो बिना एडिट लॉग के साथ है। दैट इज पॉसिबल। यस, मतलब मैं अभी से मेरे नॉन कॉर्पोरेट एसएससी को एजुकेट करना चाहती हूँ, तो मेरे कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में ही ऑप्शन है। पहले मैं सिक्योरिटी कंट्रोल एनेबल करूंगी, उसके बाद मैं एडिट लॉग एनेबल करूंगी, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप 6 महीने के बाद बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो एडिट लॉग। इट्स योर चॉइस। But companies cannot use this because they have. हाँ, तो उनको तो मैंडेटरी, उन्हीं के लिए हमने EL बनाया ना स्पेशली। तो क्वेश्चन ये था कि उनको क्या सजेस्ट करूं, तो बाय डिफॉल्ट कंपनीज के लिए EL ही है, उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। कंपनी हैज टू गो, मतलब 1 पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनीज है, वो 10 ट्रांजैक्शन है, कुछ भी है तो भी उनको EL ही वापरना है। So therefore, in the interest of the audience, if somebody has both companies and non-companies individuals है, so they should maintain 2 separate tally. हाँ, that is their choice. See, अगर मैं एडिट लॉग वाले में नॉन कॉर्पोरेट को भी रखता हूँ तो nobody can stop me. I can always work. It is having same feature, only उसमें मेरा डेटा बढ़ते जाएगा। अगर मैं 50 कंपनी का अकाउंट्स लिखता हूँ तो ऑडिट ट्रेल कितनी बड़ी हो जाएगी। That is why what I am saying कि people would not like to have a trail for non-corporates. So therefore, in their interest, for all practical purposes, they should have 2 tallies. Correct. Okay. Can I ask a question, Mohit ji? 2 questions from please. Vandana ma'am, पहली चीज तो ये कि जो आपने कहा कि टैली प्राइम एंड टैली प्राइम एडिट लॉग आर द 2 separate EXE which is available to the client based on their registration कि they are company or non company. अब मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास कुछ छोटे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ नॉन कॉर्पोरेट्स हैं और कुछ कॉर्पोरेट्स हैं।
तो मेरा जो TSS है वो अगर आज की डेट में मेरा रिन्यूड है, तो आई हैव अ ऑप्शन टू कीप 3 टाइप्स ऑफ टैली विद मी, 2 टैली प्राइम एंड 1 इज टैली ERP9 फॉर द सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है। अच्छा मैडम, सेकंड क्वेश्चन पोस्ट टू यू इज, इन टैली प्राइम एडिट लॉग there is a feature of administrator and user as a security feature. So let's suppose there is a company name ABC Private Limited and there is a administrator name ABC and their sub user is XYZ. So entry can be posted by either ABC or XYZ. When I want my backup file from the client for the audit purposes, so when I put that file in my auditor version, so will it require me to be an administrator or user, or I will be requiring their particulars to log in my? I will give you. Point, like, मुझे उनकी फाइल में. I got your question. Time permits. Give me 2 minutes. Can I showcase how it works? I will show you live demonstration. Yeah, please. Basically, अगर यहाँ पे ना ये समझ लो कि क्लाइंट का प्लेस है, उनके पास ये यूजर्स एंड पासवर्ड रहते हैं, उसमें आपको यू आर अ टैली ऑडिटर. सो व्हाट इज द फीचर, आपको एज अ ऑडिटर अपने आप को ऑथराइज कराना है उनके डेटा के अंदर जाके. दे विल गिव यू दिस एक्सेस. मेरा जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, जैसे उन्होंने बताया वो CA है तो उनका लाइसेंस उनके ईमेल एड्रेस के थ्रू ट्रैक होता है. सो ही हैज टू आस्क द क्लाइंट टू जस्ट एनेबल इन लिस्ट ऑफ यूजर his ID and just yes and yes and control A. तो फिर वो उनके वहां जब ये टैली डेटा जाएगा तो वो अपने लॉगिन से अंदर एंटर हो सकते हैं. आप समझ गए? तो कैसे होता है वो भी अभी एक बार बता देती हूँ. यहाँ से मैंने कंपनी बंद कर दी और यहाँ पे अभी ये मेरा एज अ ऑडिटर मेरे वहां आके डेटा ऑडिट के लिए आया है फॉर एग्जाम्पल. सो व्हाट आई शुड डू, आई शुड पुट माई पासवर्ड, login ID, and I get into that data and then I do the audit. Understood? फिर मैं जाके पूरा वाउचर वेरिफिकेशन, पूरा डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ. ये पूरा मॉड्यूल है अपने लिए अलग से वेरिफिकेशन के लिए. ओके, आपको वहां पे पूरा मिल सकता है फिल्टर डेटा एंड एवरीथिंग once you go inside the data. Understood? वो बाद में अभी टाइम परमिट हम पूरा 1-1.5 घंटे का टैली का ऑडिट सेशन ही लेंगे. नाउ इट इज टाइम फॉर, बट आई थिंक दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड. अब आप समझ लो कि ये ऑडिटर ने काम किया है उसके अंदर. बेसिकली ऑडिटर देख रहा है, व्यू कर रहा है उसका डेटा. यू अंडरस्टूड सर? आई होप आई एम क्लियर. मैंने ऑडिट यहाँ पे, यहाँ देखो आप एंटर करके ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो A करके जाना है और इसको अभी मैंने बंद कर दिया. और मैं एज अ ऑडिटर जाना है तो मुझे मेरा खुद का ईमेल एड्रेस यूज करना है बिकॉज आई एम ऑथराइज्ड टू डू द ट्रांजैक्शन या व्यू द ट्रांजैक्शन द वे दे हैव गिवन यू द राइट. अंडरस्टूड? आप, और ये मैंने इंटरनेट के थ्रू नहीं किया, मेरे ऑफिस के अंदर ही ऑन साइट प्रीमाइसेस आई कैन यूज द डेटा लाइक दिस. ओके, तो ये क्लाइंट को इनेबल करके देना पड़ेगा ऑडिटर को. Yes, they should authorize you to see audit their data ना. तो बिना अथॉरिटी हम किसी के डेटा में कैसे जा सकते? नहीं, तो आपने जो मेल आईडी डाला उसका क्या सिग्निफिकेंस था? टैली का लाइसेंस हमेशा आपके उसके साथ ट्रैक होता है ईमेल एड्रेस के साथ. अगेन आई विल शेयर द स्क्रीन और यहाँ पे F1 हेल्प में अबाउट में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ये लिखता है लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटर. आपका ईमेल एड्रेस इज योर ट्रैकिंग, मतलब यू आर द ओनर ऑफ दैट लाइसेंस एंड देन यू आर ऑडिटर. यहाँ पे देखो ऑडिटर लिखा है, कहा कब तक वैलिड है आपका लाइसेंस. एंड आपको वर्चुअली 10 लोग मीन्स मेरे नीचे मेरे 9 आर्टिकल को मैं उनके ईमेल एड्रेस से भी ट्रैक कर ऑथराइज कर सकता हूँ ऑडिट करने के लिए. तो मेरी अलग अलग 9 कंपनियां हैं जहां मेरा ऑडिट चालू है. तो वो क्लाइंट को मैं बोलूंगी कि समझो mohit@gmail.com को आप ऑथराइज करो तो मेरा ये लाइसेंस से वो लोग मतलब ऑडिट कर सकते. मतलब मुझे पहले मोहित को एनेबल करना पड़ेगा एज अ यूजर and then that company can give access to Mohit. So that facility is also available to the auditors. से ऑडिटर का अलग टैली है ये? Yes, auditor हमारा वर्जन ही हमको मतलब there is a separate license for auditors. Okay. Because वो इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप है उनका. Okay. तो वो टैली का जो पोर्टल होता है ना, सेल होता है, तो उसमें मल्टी यूजर
गोल्ड यूजर कहा जाता है, वो लाइसेंस हमको सब्सिडाइज प्राइस में आता है बिकॉज ऑफ MOU एंड देयर इज अ सेपरेट, हम जब सेल करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर ऑडिट वर्जन लिखा जाता है उसके अंदर, और बाकी सिल्वर जो सिंगल यूजर होता है। आई होप आई एम ओके, जितना दे सकते हैं इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। Nice. So I think we have to go to the next where. So Vandana ji, I think your presentation was excellent and you have answered many of them or most of the questions. Questions तो भी रहेंगे ही. So it will progress and maybe we will need more and more deliberation in time to come. आप लोग भी सॉफ्टवेयर को upgrade करते रहेंगे to the needs of our fraternity. So with this, we take up the next session. Nitesh ji, नवीन, अभी हम नेक्स्ट किसका ले रहे हैं? कुणाल सर का अपने कर लेते हैं सर. Let's take up Kunal sir's session and I think Kailashpati sir is also with us, but his video is off, sir. I think so. Okay. So Kunal ji, आप next. आप Kunal ji is doing which software? Yes, sir. Very good evening to all of you. Yeah. Zoho. Kunal is in Yes. Zoho. Okay. Yeah, I'm taking. And I put my number in a chat box with the some participant has asked for it. Yeah, please. Thank you. Thank you, Vandana ji. Yeah, Kunal ji, you can start your session. So I'll directly go to the Zoho portal where I can show you like how this audit log works and how this will be like helping us in doing this account, like keeping this accounting reform. So if I like, first of all, I would like to introduce myself. I am my name is Kunal and I am qualified chartered accountant, and basically we are mostly dealing with Zoho clients and Zoho, like whatever businesses like are there in Zoho, I help them in migrating to other accounting software to Zoho Books. So let's go to the accounting software directly. Like this is the accounting software. I hope you can see my screen now. I hope my screen is visible. Yes, it's visible. So we can do one practical live example here. Like I am creating one party over here. For example, just a demo party so that we can see how this complete audit log will work. Like I'm creating one XYZ party. One new party I am just creating here, marking it as unregistered party, and I have just created this party in this Zoho Books. This is Zoho Books dashboard, and when I go to this sales portal, I have created this party XYZ Private Limited. Now what I am doing, I am creating one invoice. Like see, I am creating one invoice with this party. Here you can see customer name, invoice number, order number, invoice date, terms, due date, salesperson name, subject, item details, and then total amount. तो मैं यहाँ पर एक पार्टी को ऐड करा है जो मैंने अभी XYZ, उस पार्टी को मैं एक ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड दिस इनवॉइस. अब ये इनवॉइस मैं बैक डेट पे भी क्रिएट कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल 3rd की डेट का ये इनवॉइस है. और अब यहाँ पर क्या है, ये मैंने इनवॉइस की डेट 3rd की डाली और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई सर्विस सिलेक्ट करी, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सर्विस, और मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया. आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस इनवॉइस और मैंने यहाँ पर इसे GST अभी के लिए आई एम एक्सक्लूडिंग बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक सिंप्लिसिटी. सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस इनवॉइस. यू कैन सी यहाँ पर सारा इनवॉइस आ रहा है, अकाउंटिंग सर्विस आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. और अगर आप यहाँ पर इसको यहाँ पर कमेंट और हिस्ट्री में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कि कुणाल कुमार has created this invoice of rupees 50,000 and this invoice has been like marked as sent. Like इसका मतलब I have mailed this invoice or sent this invoice to the client. और यहाँ पर ये overdue भी दिखा रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल what I do, मैं इसकी पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू दिस इनवॉइस और मैं इस इनवॉइस का पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ. रिकॉर्ड पेमेंट 50,000 और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेमेंट कैश में रिसीव किया है तो जस्ट रिकॉर्डेड इट एज कैश और मैं इसे जाके यहाँ पर पेमेंट रिकॉर्ड सेव कर दिया. तो अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे, व्हेन यू गो टू
into reports in this Zoho books. यहाँ पर left में बहुत सारे tabs है. You can see home, items, banking, sale, purchase, time tracking, e-way bill, GST filing, accountants and reports. तो जब मैं इस reports में जाऊंगा और सबसे last में जाऊंगा, सबसे last में when I go तो you can see this activity log and audit trail. यहाँ पर activity log and audit trail के अंदर आपको यहाँ पर show होगा. अभी यहाँ पर previous year है, इसको मैं today का कर देता हूँ. तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा. You can see कि 11 अप्रैल 2023 6:21 पर लाइक किसने इनवॉइस क्रिएट करा, हु हैज क्रिएटेड दिस इनवॉइस, किसके लिए इनवॉइस क्रिएट करा और उसका पेमेंट भी रिसीव हो गया. तो यहाँ पर ये पूरा ऑडिट लॉग मेंटेन हो रहा है. अब नाउ व्हाट आई वांट टू डू, अगर मैं इस इनवॉइस को जाके डिलीट करता हूँ या इस पेमेंट को जाके डिलीट करता हूँ, तो यू कैन सी कि इसका पेमेंट यहाँ पर देखिए, पेमेंट रिसीव पर मैं गया, मैंने इस पेमेंट को डिलीट करने की बजाय या मैंने इनवॉइस के साथ फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पेमेंट को डिलीट कर दिया. आई एम डिलीटिंग दिस. तो इट्स शोइंग कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस. आई सेड ओके. और मैंने इनवॉइस पर भी गया और इनवॉइस के भी साथ जाके मैंने मॉडिफिकेशन किया. फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू एडिट दिस इनवॉइस एंड नाउ आई वांट टू गिव डिस्काउंट या कुछ एडजस्टमेंट. मैं यहाँ पर 10,000 का डिस्काउंट देना चाहता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन 10,000 रुपीज डिस्काउंट इन माई इनवॉइस. तो अब मैंने इसे जाके सेव करा. अब ये रीजन पूछेगा कि व्हाई यू आर एडिटिंग दिस इनवॉइस. तो एक तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज पर न्यू टर्म्स, हमारी क्लाइंट के साथ कुछ न्यू टर्म्स डिस्कस हुई, तो उसकी बिहाफ पे मैंने ये इनवॉइस चेंज कर दिया. अब अगर मैं जाके अपनी रिपोर्ट्स में देखूंगा वापस, जहां पर ये ऑडिट लॉग मेंटेन होता है, तो वहां पर अगर आप जाकर देखेंगे तो यू कैन सी एक्टिविटी लॉग्स के अंदर आएगा यहाँ पर कि पेमेंट रिसीव हुआ और उसके बाद इस इनवॉइस को अपडेट किया गया. यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं हट. और जो ये मैंने पेमेंट रिसीव डिलीट किया था, इसका भी आपको रिकॉर्ड आ रहा है कि आपने पेमेंट रिसीव डिलीट किया था. किसने किया था? कुणाल कुमार ने डिलीट किया था. कितने बजे किया था? 6:22 पे डिलीट किया था. तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑडिट लॉग में मेंटेन होती है. और जैसा कि मोहित सर ने पूछा था कि अगर पूरे साल का मुझे देखना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेक फॉर फुल ईयर, तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के ऑडिट लॉग पर गया, तो यू कैन सी पूरे साल का ऑडिट लॉग मेरे पास यहाँ पर आ रहा है. और आई कैन एक्सपोर्ट दिस और मैं अपने से वर्किंग पेपर्स में आई कैन टेक पार्ट ऑफ दिस एज अ वर्किंग पेपर. तो ये पूरे साल का मेरे पास ऑडिट लॉग आ रहा है कि कब कौन सी चीजों में चेंज किया गया था. तो दिस विल हेल्प अस इन ऑडिटिंग. और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ऑडिट लॉग का फीचर अगर जोहो में बात करें, तो जोहो में हर प्राइसिंग के ऊपर है, हर प्लान के ऊपर है. whether you are using free plan of Zoho, whether you are using any paid plan of Zoho, this is mandatory enabled in Zoho books. Unlike in Tele, where we have option, जहाँ पर हम उसको disable कर सकते हैं, enable कर सकते हैं या edit log वाला ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है Zoho के अंदर. Zoho के अंदर एक ही वर्जन है जहाँ पर आपको ऑडिट लॉग मैंडेटरी है, चाहे यू आर इंडिविजुअल, चाहे यू आर पार्टनरशिप फॉर्म, LLP कंपनी. If you are running any kind of business, then audit log is 100% available in this Zoho books. तो यहाँ पर ऐसा कोई फीचर नहीं है. अब रिपोर्ट्स के अंदर ये सारी चीजें आप जाके देख सकते हैं, कब कौन सा आपका एडिट हो रहा है, कब डिलीट हो रहा है. तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है अगर मैं कहूंगा तो. सिमिलरली सेल्स के अलावा परचेज के बिल्स में भी हम ऐसा कर सकते हैं. पी आर रिकॉर्डिंग बिल्स, तो वहां पर भी इस तरीके के हमारे पास ट्रांजेक्शन्स, हमारे पास ऑडिट लॉग्स होंगे और इसे हम यहाँ पर कमेंट्स में भी जाके देख सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सेल्स में, इनवॉइस पर जाऊँ, देन इफ आई ओपन एनी वन इनवॉइस, यू कैन सी हियर कमेंट्स में, यहाँ पर कमेंट्स में पूरी लॉग हिस्ट्री क्रिएट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस क्रिएटेड 11/4/2013 50,000, इनवॉइस हैज बीन सेंट, payment has been received, then payment is deleted, and then invoice is updated from 50,000 to 40,000. तो यहाँ पर ये पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है. और इवन इफ यू वांट सम कंपैरिजन, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कंपैरिजन भी मिलेगा कि व्हाट वाज आवर अर्लियर ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज करंट ट्रांजैक्शन. तो यहाँ पर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल टुडे डेट, एंड इफ वी गो टू दिस view audit trail, if we click this, we can compare all the data. हम यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं
कि व्हाट वाज द ओल्ड वर्जन एंड व्हाट वाज द न्यू वर्जन, कहाँ पर हमने क्या चेंज करा है वो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लाइंट को यहाँ पर डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पर साफ साफ शो कर रहा है कि आपने जो मॉडिफिकेशन करे हैं वो कहाँ पर करे हैं। दिस इज ऑलरेडी बीन मार्क्ड। सो आई थिंक जो बुक्स में मेरे पास बताने के लिए इतना ही है। नाउ आई वुड लाइक टू टेक अप क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं इन दिस जो बुक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू। नवीन सर, यस मोहित यस। सर थोड़ा बाहर गए हैं। सो आई अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो किसी के भी ऑडियंस में तो यू कैन, आई एम हैप्पी टू आस्क आंसर। In case anyone has any question, you can unmute yourself and ask the same. कुणाल, मेरे हिसाब से जोहो में बाय डिफॉल्ट ऑडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, या यस आपको वंदना खरीदने मैम। के बाद एनेबल करना पड़ेगा? नहीं, यस वंदना मैम, जोहो बुक्स इज अ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आप जाएंगे जोहो की वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जोहो बुक्स, और इसमें लेट मी ओपन द वेबसाइट। अगर आप गूगल पर जाएंगे और जो बुक्स की प्राइसिंग देखेंगे, वैसे जो बुक्स इज कम्प्लीटली फ्री। अगर आपकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से कम है, यू आर हैविंग स्मॉल बिजनेस, तो आपके लिए जो बुक्स कम्प्लीटली फ्री है, और इसके अंदर भी ऑडिट लॉग है। तो हर प्लान के अंदर ऑडिट लॉग है, आपको कुछ भी अपडेट नहीं करना। जैसे आपको टेली के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ अपडेट करना पड़ता है, वेबसाइट पे जाना पड़ता है और अपडेट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप बैकग्राउंड से ही अपडेट होता है। यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी टास्क। सो अपने आप ही पीछे से उसको, क्योंकि ये क्लाउड पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है, तो मेंटेनेंस, अपडेशन, दिस इज ऑल यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जोहो, नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट एवरी टाइम। और इवन अगर आप डेटा का बैकअप देखें तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, अगर आप डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ यस पर यस आपको डेटा बैकअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना सारा डेटा, वट एवर ट्रांजेक्शन्स यू हैव, आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल एक और भी चीज है इसके अंदर, यहाँ पर सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, यूजर एंड रोल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर्स एंड रोल्स हैं, और यहाँ पर आप किसी भी यूजर को इनवाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने अकाउंटेंट को इनवाइट करना चाहता हूँ, यानी उसका नाम लिखूंगा मिस्टर ए, जो भी उसका नाम होगा, उस अकाउंटेंट को मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। उसका फॉर एग्जांपल कोई भी ईमेल आईडी है, यहाँ पर उसका ईमेल आईडी में टाइप करूंगा accountant@, फॉर एग्जांपल gmail.com। तो उसको इनविटेशन जाएगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपने अकाउंट्स चेक करने के लिए इनवाइट किया है। और यहाँ पर ऑडिट लॉग प्रॉपर मेंटेन होगा। यू विल सी कि ये जो चेंजेस करे हैं, यहाँ पर जो रोल्स के अंदर आता है, हम देखते हैं कि चेंजेस जो भी हुए हैं, मॉडिफिकेशन जो भी हुए हैं, वो किसने किए हैं। कुणाल ने चेंज करे हैं, मोहित ने चेंज करे हैं, राहुल ने चेंज करे हैं, या करण ने चेंज करे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको शो होंगी। यहाँ पर इस तरीके से कि अगर कोई कुणाल चेंज करेगा तो यहाँ पर आपका नाम आएगा, अगर वंदना मैम चेंज करेगी तो उनका नाम आएगा, अगर कोई और चेंज करेगा तो उनका नाम यहाँ पर शो होगा आपको। Kunal sir, Thank you. someone is asking a very good question that if I want to if I am using Tally now and wish to use Zoho, so how is that possible? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यू आर यूज अभी टैली यूज कर रहे हैं, यू वांट टू माइग्रेट इनटू ज़ो बुक्स, तो आपको जितना भी आज तक का सारा डेटा है अप टू 31 मार्च 2023, वो आपको सारा माइग्रेट करना पड़ेगा। और 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स आप ऑडिट लॉग का फीचर इसमें यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। So is there any template available to migrate or how, मतलब एक्सेल से ट्रायल बैलेंस कैसे खींचोगे? हमें पंच इन करना है डेटा फॉर मास्टर? एग्जाम्पल आपको जो भी इंपोर्ट करना है, क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आइटम्स हैं, पहले आपको आइटम मास्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जो भी आपके आइटम मास्टर है, यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट अ एक्सेल फाइल। यहाँ पर आपको इंपोर्ट आइटम्स दिख रहा होगा और यहाँ पर एक्सेल फाइल है, तो सारे आइटम्स आप एक बार में इंपोर्ट कर सकते हो इंस्टेड 1 by 1। सिमिलरली जितने भी सेल्स इनवॉइसेस आपके ज़ोहो में है और आपको यहाँ पर इंपोर्ट करने हैं इन वन शॉट, तो आप सारे इनवॉइसेस एक बार में एक्सेल फाइल के थ्रू यूज करके आप सारे इनवॉइसेस एक बार में इंपोर्ट कर सकते हो।
सिमिलरली जो भी आपकी पेमेंट रिसीव है, 1 बाय 1 डालने की बजाय आप एक ही बारी में सारी आपकी जितनी भी पेमेंट्स है उन्हें इस एक्सेल टेम्पलेट्स के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। जितने भी परचेज बिल्स हैं उसको भी आप 1 बाय 1 करने की बजाय एक ही बारी में जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, बिल्स है, वो यहाँ पर आप इस जो 3 डॉटेड्स आ रहे हैं इसके थ्रू आप अपने सारे बिल्स एक बार में इंपोर्ट कर सकते हो और अपना सारा डेटा टैली से ज़ोहो में माइग्रेट कर सकते हो। तो वही होगा कुणाल, जैसे कि अभी हम एक समझो अभी आज बात किया और कल कोई कर रहा है ट्रांसफर डेटा, तो एडिट लॉग विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड ना, क्योंकि डेटा 1 से 10 का तो एडिट लॉग रहेगा ही नहीं उसके 1 से 10 का एडिट लॉग रहेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। रहेगा। क्योंकि दैट इज वन थिंग देयर। अनदर थिंग व्हाट वाज कमिंग इन माय माइंड इज कुछ तो था क्वेश्चंस, आएगा वापस, आई विल कम बैक टू यू। So whenever you come into Zoho, तो from very first day, even जब भी आप Zoho पे आएंगे, फिर from very first day यहाँ पर क्या है कि आपका जितना भी ऑडिट लॉग है वो परमानेंटली मेंटेन हो रहा है। आपको आप you can't disable, there is no such feature, even if you are small business, you are getting a benefit of this audit log. अच्छा, इसमें खाली एक ही अपना जो मुझे ऑब्जर्व किया, ये अपना क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो नेट गया तो काम बंद हो जाएगा, मतलब इमीडिएटली हॉटस्पॉट या कुछ चालू करो फिर जाके चालू होगा, वो अलग बात है। Yes, definitely you are right. This is a cloud-based accounting software. Without internet, you cannot work on this. If you are having a 5G internet, तो आपका जो इंटरनेट ये जो टेली है वो जो Zoho है ये 5G की स्पीड से चलेगा, और अगर आपका 2 GB 3 GB अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी स्पीड से चलेगा। तो दिस इज कम्प्लीटली ऑन योर इंटरनेट स्पीड। रेनी सीजन वगैरह में तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा। इफ यू आर हैविंग, अगर आप कोई कॉर्पोरेशन रन कर रहे हैं तो मे बी आपके पास वाईफाई होगा अपने ऑफिस में, तो अगर वाईफाई में ठीक स्पीड आ रहा है तो सब कुछ होगा। अगर मान लो अगर आपके ऑफिस में इंटरनेट प्रॉब्लम रहता है तो फिर ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप जीमेल भी नहीं भेज सकते, अपने क्लाइंट के साथ मेल भी नहीं कर सकते, स्टेटमेंट में भी दिक्कत आएगा। तो अगर आपके पास इंटरनेट प्रॉपर है देन इट विल वर्क वेरी फाइन। And how to what is the can logs be deleted? No, there is no option to delete the log. Even मैं चला जाता हूँ एक बार रिपोर्ट्स के अंदर, if I go to reports, और मैं यहाँ रिपोर्ट्स में जाता हूँ ऑडिट लॉग्स, एंड देयर इज यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं कस्टमाइज रिपोर्ट करने का, कुछ कस्टमाइजेशन करने का, और मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं शेड्यूल रिपोर्ट। आप रिपोर्ट्स को शेड्यूल कर सकते हैं, अपने ऑडिटर को, अपने जो भी मैनेजमेंट है उनको रिपोर्ट शेड्यूल कर सकते हैं कि हर 30 दिन के अंदर ये रिपोर्ट्स जो भी सीईओ हैं या जो भी फाइनेंस में मैनेजर हैं उनको ये रिपोर्ट जाए, तो ये यहाँ पर जा सकती है, या अपने ऑडिटर को शेड्यूल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं यहाँ से अपने यूजर्स को, प्रिंट ले सकते हैं इनका, उसके अलावा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट आई कांट सी एनी ऑप्शन कि आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। सो देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिलीटिंग ऑडिट लॉग। ओके सर, एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, which is better, Zoho or Tally? I think that should not be answered. Yes, that is individual, हर किसी की इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। If you feel like कि आप टेली में ज्यादा कंफर्टेबल हैं then you can go with the टेली, but if you are feel like कि अगर आप क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ज्यादा कंफर्टेबल हैं then you can go with Zoho. So that is completely your choice. Because आज हम कंपैरिजन के लिए नहीं बैठे कौन सा ज्यादा है, आज हमारा जो पर्पस है टू सी दी ऑडिट लॉग्स कि ऑडिट लॉग का फीचर टैली में कैसा है और ऑडिट लॉग का फीचर ज़ोहो में कैसा है। So question is, if you are a cloud based software, so ये सर्वर आपका इंडिया में आउटसाइड इंडिया, and how do you give the backup? How the client takes the backup on a daily basis? Actually बैकअप इसमें कैसा होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर यूजिंग जीमेल, सो क्या आप उस जीमेल का डेली बैकअप लेते हैं क्या? नो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन जीमेल, आपके क्लाउड पर ही वो सेव रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजिंग अ गूगल ड्राइव, तो एवरीथिंग इज देयर, आप उस गूगल ड्राइव को कोई एक्सपोर्ट करके अपनी हार्ड डिस्क में नहीं डालते। सिमिलरली but law required is, if you have heard Mr. Singhal saying, law का requirement है, if you are using a server, if your all data is on cloud, then आपको बैकअप डेली बेसिस में लेना पड़ेगा। राइट,
तो देयर इज आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो जोहो बुक्स है इसका जो सर्वर है वो इंडिया में ही है, जो भी इंडियन इंडिया में ही क्लाइंट्स है इंडिया में ही है। जो यहाँ पर ओके आपको ऊपर दिखा आ रहा है zoho.in, इसका ओके मतलब जो है zoho.in का मतलब है कि सर्वर इंडिया में है। अगर zoho.com आ रहा है तो इसका ओके मतलब आपका सर्वर या तो यूएसए में है या कहीं और दूसरी कंट्री में है। तो मैं एंड ये आपको तो मैं आप सबको मैं यही ऑडियंस को कहूंगा, तो जब आप जोहो में साइन अप करें तो जरूर देखें कि आप zoho.in में साइन अप कर रहे हैं या zoho.com में साइन अप कर रहे हैं। गॉट इट। एंड इसमें एक और है, एज्यूमिंग हमको बैकअप लेना है, से फॉर एग्जांपल, देन देयर इज एन ऑप्शन टू टेक बैकअप। यस, आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डेटा बैकअप। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा बैकअप, आपके जितने भी कस्टमर मास्टर, वेंडर मास्टर ट्रांजेक्शन्स, वो सारी बैकअप हो जाएंगी इन एक्सेल फॉर्मेट। इवन आप अपनी अटैचमेंट्स भी हैं उसको भी बैकअप करना चाहते हैं तो वो भी जिप फॉर्मेट में आप यहाँ पर उसको बैकअप ले सकते हैं। तो ये आप रोज लेना चाहें आप तो रोज भी ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। ओके। कुणाल जी, एक क्वेश्चन आया है, हाउ टू गेट थर्ड पार्टी रिपोर्ट एश्योरेंस फ्रॉम जोहो बुक्स? थर्ड पार्टी एश्योरेंस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट? थर्ड पार्टी रिपोर्ट एश्योरेंस फ्रॉम जोहो बुक्स। ठीक है सर, उसमें Why कोई do इशू we need in this? Because it's not that it is a outsourced bookkeeping. It is a software which we are using. वो तो requirement है when third party is maintaining the accounts. Yes, yes, yes. But इसमें since the data is in your cloud server, what sort of agreements you enter with the client as far as data confidentiality and everything? As such as about the agreements, I need to check about that. Like it's a like जैसे हम दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लाइक टैली एंड टैली में तो देखिए क्या है, हमारा डेटा हमारे पास रहता है, राइट मेरे डेस्कटॉप पे। बट हम जब क्लाउड में यूज कर रहे हैं तो मेरा डेटा तो सारा सर्वर में है आपका, यानी जोहो का। सो हाउ माय डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन? यस, तो आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर एक ना कंप्लायंस होता है मेरे जो कि यूएस में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं जीडीपीआर कंप्लायंस। तो मैं आपको उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो GDPR compliance is about the privacy and data protection of law that regulate how EU residents or data protected by the companies and enhance control of EU residents and over the personal data। तो जो भी सारा आपका पर्सनल डेटा है इसके अंदर जो क्या वो GDPR compliant होता है। GDPR का मतलब वो कहीं से किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, कहीं से किसी को एक तरह से मेल नहीं किया जा रहा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। तो ये GDPR की कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर GDPR को कोई भी कंट्री कंप्लाई नहीं करती, कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लाई नहीं करता, तो उसके लिए कुछ इस तरह की पेनल्टीज होती हैं। तो जोहो जो है वो GDPR कंप्लायंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। GDPR is something in India, you want to say? No sir, it is in EU, I think so. It is based on the EU countries. So therefore India के लिए क्या relevant है? इंडिया के लिए आई नीड टू चेक, आई कांट आंसर इमीडिएटली राइट नाउ। ओके ओके, हाँ ठीक है, आप हम लोग को बाद में बताइए। या सो एनी मोर क्वेश्चंस नवीन? नो सर, चैट बॉक्स में तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, because we have only 20 minutes now. Yes, and I think we should carry it forward to the next speaker. Kailash sir is with us. Quite nice, but एक से होगा नहीं। I think Nitesh ji has to do some multiple programs so that we all get educated, but it was quite nice. Good evening, everyone. Myself is Kailashpati Mamia from Shiva International. मैं आज आपको बीजी मैं ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. You are audible, sir. मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, क्योंकि टाइम काफी कम है। मैं अच्छे से जितना बता सकता हूँ। And we can extend by 10-15 minutes. That is not a problem. Huh? Okay. Yes. कैलाश सर का इंट्रोडक्शन सर एक टू लाइंस का, अगर इफ यू परमिट। मैं या प्लीज नवीन जी। या Kailash sir is the owner of Shiva International, who are leading distributors of information technology products and services with more than
a decade since 1998, sir. It's and sir is known for his post and pre-sales services. With this, I would like to welcome Kailashpati sir. Sir, you can continue now. Thank you. Thank you. सर सबसे पहले क्या है ऑडिट ट्रायल आपने सब कुछ जान चुके हैं, सुबह से अपने को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सभी जगह से। सबसे पहला जो पॉइंट है सर, ऑडिट ट्रायल हमें दरकार पड़ रही है। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं अपने जो स्टाफ है उसको एरर ही नहीं करने दूं। वो एरर करेगा तब मैं उस एरर को ठीक करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि मैं उसको रोक दूं कि वो एरर ही नहीं कर सके। तो बीजी सॉफ्टवेयर क्या है, इसको लेके बहुत बढ़िया से यूजर इंटरफेस बनाया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ सर। जैसे मैंने एक यूजर बनाया ABC, यहाँ से इस यूजर के बारे में मुझे उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो बैक डेटेड एंट्री कर सकता है, वो बैकअप ले सकता है, मैं उसको हर रकम से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बैक डेटेड एंट्री को यस कर देता हूँ और उसको किस चीज के लिए बैक डेटेड एंट्री अलाउ करूंगा, फ्रॉम द वोचर डेट और फ्रॉम द सिस्टम डेट। मेरे पास दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। तो जैसे मैंने उनको दे दिया कि भैया सेल को कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता, ऑल सीरीज, अगर ऑल सीरीज भी होता है, क्रेडिट होता है, कैश होता है, उस हिसाब से मैंने उनको 0 डे दे दिया। तो अब वो बंदा एक बार अगर सेल बिल बना लिया, ना उसे वो मॉडिफाई कर सकता है, ना उसे कैंसिल कर सकता है, ना ही उसे डिलीट कर सकता है। तो इस टाइप से मैं उसको सेल परचेज हर एक ऑप्शंस के ऊपर मैं उसको कंट्रोलिंग कर सकता हूँ कि वो बैकडेटेड एंट्री नहीं कर सकता, तो मैं वहां पे उसको लॉक कर सकता हूँ। इसके साथ साथ ही मैं ट्रांजैक्शंस के अंदर भी उसको, यहाँ पे जैसे मुझे सेल्स के अंदर सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि मैंने उसको जस्ट ऐड का, लिस्ट का और व्यू का ही ऑप्शन दिया। ना तो वो बंदा मॉडिफाई कर सकता है एक बार एंट्री करने के बाद, ना ही वो डिलीट कर सकता है, ना ही कैंसिल कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं उसको यहाँ पे कंट्रोल कर देता हूं तो मेरे एरर काफी कम हो जाएंगे। अब क्या होता है कि कुछ एक ऐसे होता है कि उसने सेल बना दिया, अब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो अपने उस यूजर को भी बना देंगे जो मॉडिफाई कर सकता है। प्लस जैसा कि नियम है कि अपने अगर सेल्स को मॉडिफाई करते हो तो उसके लिए मुझे एक रीजन देना पड़ेगा क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं ये वगैरह। तो उससे बेस्ट है कि जैसे बोला गया कि अगर सेल बन जाती है तो अपने सीधा ही सेल्स रिटर्न ही उसका बना लें। इस तरीके से अपने यूजर्स को यहाँ पे पूरा कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है सर, मैं एक सेल को ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, या मेरे ऑलरेडी काफी बने हुए हैं, मैंने एक डेमो रेडी किया है। देखिए सर, अपने 3 रकम से ये बना के रखा हुआ, अगर समझिए मेरे 3 बिल, अगर किसी भी बिल को मैं अगर डिलीट करने जाता हूँ तो वो डिलीट करने देगा नहीं उसको। वो आपको एक मैसेज शो करेगा कि आपके जो भी बिल्स है, आपको बीच के बिल्स को आप डिलीट नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि मैं इसको डिलीट तो नहीं कर सकता लेकिन कैंसिल कर सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर मुझे माल रिटर्न दे गया, सेल्स रिटर्न भी नहीं आया, मेरे गलती से कुछ भी हुआ, तो मैं इसको बाकायदा कैंसिल कर सकता हूं। मैंने इस बिल को सर कैंसिल कर दिया, यस। अब ये जैसे ही मैं कैंसिल करता हूं तो मुझसे बाकायदा एक तो नरेशन पूछता है कि आपने क्यों किया, मैंने रॉन्ग कर दिया, जो भी है मैं कुछ भी यहाँ पे मैसेज यहाँ पे दे दूंगा, ये मेरा सारा का सारा चीज को रिकॉर्डेड कर लेता है। अब आता है कि इतने सारे बिल्स को मेरे को चेक करना है भैया किसने क्या किया क्या नहीं किया। इसका इतना बढ़िया से ऑडिट ट्रायल बनाया हुआ है, अपने सीधे चेकलिस्ट में जाएंगे, ऑडिट ट्रायल में जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी कि भाई हम 1 साल का एक साथ देख सकते हैं, 1 महीने का एक साथ देख सकते हैं, जैसा चाहे आप उस रकम से देख सकते हैं। प्लस ऑडिट एट ए टाइम आप चाहते हो कि पूरा का पूरा डे बुक देख सकूं, खाली इन्वेंट्री देख सकूं कि मेरा सेल परचेज के अंदर कुछ काम हुआ है, या मैं पैरोल बुक को देख सकूं, या अदर्स वोचर्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ हुआ है, या लिस्ट ऑफ मास्टर्स में अगर किसी ने कोई भी चीज चेंज की है। मैं एक बार यहाँ पे अकाउंटिंग डे बुक पूरा दे देता हूँ, और यहाँ पे आपको फिर भी ऑप्शन मिलता है कि जो एडेड हुआ है वो देखना है कि खाली मॉडिफाई देखना है कि डिलीटेड देखना है कि अदर इन्फॉर्मेशन देखना है। आप यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो मुझे क्या चीज की लिस्ट देखनी, मुझे खाली मॉडिफाई की डिलीट देखनी है, और एक अदर इन्फॉर्मेशन भी रख लेता है। तो यहाँ पे सिर्फ वही बिल दिखाएंगे, प्लस यहाँ पे आप डेट डाल सकते हो, आपको पूरा साल का चाहिए, 3 महीने का चाहिए, या 4 महीने का चाहिए। आप यहाँ पे एंटर करोगे, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर देगी।
कि आपने क्या था, मेरा ओरिजिनल वोचर जैसा ये था, फिर मेरे फाइनल वोचर मेरे 1770 का हो गया पहला वाला। किस कंप्यूटर से आपका एंट्री हुआ, किस यूजर ने एंट्री की, कौन सा डेट और टाइम है उसने मॉडिफाई किया तीनों बिल को, कौन सा टाइप था, कौन सी सीरीज थी, अगर आपकी कैश क्रेडिट की सीरीज होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वोचर नंबर क्या था, मैंने 2 नंबर वोचर को 2 बार मॉडिफाई किया, वो भी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा चीज दिखा देता है। प्लस इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी वोचर्स को चेक कर रहे हैं ऑडिट के समय पे, किसी भी वोचर्स को, तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर वो कुछ भी मॉडिफाई या कैंसिल है तो देखिए यहाँ नीचे एक है, क्रिएटेड किसने किया, मॉडिफाई किसने किया, और डबल क्लिक करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं वहीं पे ऑन द वोचर्स पे। ये इसका ऑडिट ट्रायल्स का सारी चीजें। इसके अंदर सबसे मजे की बात है, इंटरेस्ट लेवल्स बहुत इजी हैं। आइटम वाइज आप किसी भी आइटम ले लिया आपने, एंट्री लेवल्स इसकी बहुत इजी है, सब चीज अपने आप कैलकुलेट हो गया सर। यहाँ पे देखिए अपने आप ही टैक्सेस वगैरह सब ले लिया उसने, आपको कुछ भी करने का दरकार नहीं पड़ता। आप सिंपली कहीं से भी कोई भी आइटम, अगर आपको यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है आप ऑनलाइन आइटम क्रिएट कर सकते हो, सारी चीजें बनी हुई रहती है सर। जीएसटी इसका 18% है। आपको यहाँ पे कोई भी अगर आप कोड देके यहाँ पे तुरंत उसको वैलिडेट कर सकते हो कि ये एचएसएन कोड सही है कि नहीं है, ये ईमेल के लिए सही है कि नहीं, ई पोर्टल्स के लिए सही है कि नहीं, जीएसटी के लिए सही है कि नहीं। मैं इसका आपको तुरंत वहीं पे ही बता देगा कि वैलिड है कि नहीं। फिर आपका सेल प्राइस, परचेस प्राइस वगैरह आप सब इसमें डाल सकते हो। आपने ऐड डाला, ये आपका रेडी हो गया। जैसे ही मैंने ये ऐड किया, इसको जाके अगर मैं चेक करना है मुझे ऑडिट ट्रायल्स में कि क्या ऐड हुआ है, सिर्फ मुझे ऐड का देखना है तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ये मेरा ऐड आ गया। अब यहीं पे आप एंटर करोगे तो वो बिल भी आपका ओपन हो जाएगा। मैं जस्ट आपको ऑडिट ट्रायल्स के लिए ही ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और अगर मास्टर पे भी किसी ने कोई चेंजेस किया है तो आप इसका भी सारा का सारा चीज देख सकते हो। अगर किसी ने कोई मास्टर बनाया है या चेंजेस किया, किस कंप्यूटर से बना, किस यूजर ने किस डेट को क्या क्या किया, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सर अभी किसी को कोई क्वेरी है ऑडिट ट्रायल्स में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? वंदना जी का यस हाथ सर, उठा हुआ है। हाँ जी यस सर, आप ऑडिबल है सर। हाँ, तो ये ऑडिट ट्रायल्स के लिए बताया। इसका सबसे मेन फीचर है सर, आप यहाँ यूजर्स को ही अगर अपने बाइंड कर देते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो बंदा कर नहीं पाएगा कुछ भी। वंदना जी कुछ पूछ रही है? हाँ जी, हाँ जी, यस मैम। नहीं, बस वही तो डिलीट का ऑप्शन, तो अगर आप डिसेबल शुरुआत में ही कर देंगे तो वो बंदा नहीं कर पाएगा ना। यस मैम, इसके अंदर देखिए देखिए मेरा जो मैंने फर्स्ट क्या बोला, मैं रास्ता ही नहीं दूंगा ना कि आपने गलती करना है, तो आप गलती कर ही नहीं पाओगे। मैं पहला तो वहां आपको ब्लॉक कर देता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से गलती नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ तो एरर होते ही है, तो उसको मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़े। उसके लिए मैं एक अलग से यूजर ऑथेंटिकेट कर दूंगा कि ये 2 यूजर है, एक सेल का बंदा हो गया, एक परचेस का बंदा हो गया, कि जो कि भैया परचेस से रिलेटेड कोई इशू है तो वो सॉल्व करेगा, सेल से रिलेटेड वही इशू है, तो उसके पास बाकायदा पूरा का पूरा एक क्वेरीज का आंसर रहेगा कि मैंने इस कारण से किया। और जब भी आप करते हो वहां पे पूरा आप उसको मेंशन कर सकते हो। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेरी? Yeah, if anyone have any query, kindly raise your hand and then unmute. Unmute and please ask question. If anyone have any query, please ask us. Sir, सर न्यू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैली सॉफ्टवेयर ज्यादा बेटर है या फिर बिजी सॉफ्टवेयर यूज करना ज्यादा बेटर है?
सर एज पर मैंने बीजी सॉफ्टवेयर के मैडम इतने फीचर्स है ना, माने आपको आपको टैली में क्या चीज की प्रॉब्लम हो रही है, पहले ये बताइए आप टैली स्विच क्यों करना चाहते हैं, पहले मुझे उसका रीजन बताइए। कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बेटर सॉफ्टवेयर जो होगा वही यूज करेंगे, बिकॉज यस नया से नहीं, तो मुझे कुछ एक पॉइंट्स बताइए कि मुझे ऑडिट ट्रायल्स, जैसे सर का एक रिक्वायरमेंट था कि मुझे 1 साल का एक साथ देखना है, 3 महीने का, तो वो चीज आपने पूरी है, प्लस अपने उसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि मुझे ऐड करना है या खाली मॉडिफाई का देखना, कि डिलीटेड का देखना, कि अदर इन्फॉर्मेशन जर्नल वगैरह कुछ भी है उसका भी आप हर रकम से ऑडिट ट्रायल को यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सर यहाँ पे जैसे रेस्ट्रिक्शंस है कि किसी को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वो एंट्री डिलीट नहीं कर सकता यूजर पूरा पूरा मैम, यही मैं बताया कि इसका सबसे पहला जो चीज है कि मैं आपको गलती करने दूंगा नहीं ना मैम। तो सर ये फीचर चाली में नहीं रहता है क्या हम नहीं लोग? सर, एक्सक्यूज नहीं है हेलो हेलो, मैं हूँ है यहाँ पे आंसर देने के लिए। है, लेकिन ये इतना वास्ट नहीं, सुनो 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 सुनो, जैसे सर आपने बोला, कैलाश सर, ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, टैली में भी सिक्योरिटी कंट्रोल जब हम एनेबल यस करते हैं, मैं लिसन लिसन लिसन, लेट मी कंप्लीट, अ मिनट, ओनली मिनट लूंगी। उसमें ऑप्शंस होता है कि जो मास्टर क्रिएशन करना है वो ए ने ही करना है, जैसे आपने बोला ना, ए बंदा और बी बंदे को ही मैं राइट्स दूंगा, करेक्ट करेक्ट दे टू ओनली। सो दिल्ली में तो सब में ऑल्टरेशन का ऑप्शन ही नहीं है, क्रिएशन का राइट ही नहीं है मेरे स्टाफ को। आप कैसे कर सकते हो? पूरा सेशन होता है 3 घंटे का या पूरा दिन जाता है सिक्योरिटी कंट्रोल को डिफाइन करने का। हम लोग टैली के अंदर वो असाइनमेंट ही लेते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल बड़े कॉर्पोरेट्स में डिजाइन करने के लिए कि उसको क्या क्या राइट्स है। अगर आपने जोहो देखा होता तो जोहो में भी ना, जब वो ईमेल एड्रेस डाल रहे थे तो नीचे राइट्स था, एडमिन राइट है, यूजर राइट है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कुणाल विल वाउच फॉर दैट। Right. So there are whenever any software is written, we are not here to compare now Zoho, Busy. टैली यस सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट लॉग अवेलेबल है कि नहीं वो चर्चा चल रही है, या क्या क्या हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इन दैट सॉफ्टवेयर टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस, दैट शुड बी द सब्जेक्ट बेसिकली। मैम एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, 20 ईयर से मैं टैली का सर्टिफाइड पार्टनर हूँ, मुझे पता है एवरीथिंग इज देयर, लेकिन इस बिजी में क्या है, कुछ एक वास्ट है, मैंने थोड़े से उसको और अच्छे से बनाया। आई अंडरस्टैंड, वही मैंने एवरीबॉडी उनको यही मेरा खुद का क्लाइंट है, सुनो, मेरे खुद के क्लाइंट है जो बिजी में उनका ट्रेडिंग वहां पे बिजी में होता है, फिर हम वहां से टैली में डेटा लेते हैं अकाउंट्स पॉइंट ऑफ, क्योंकि मैं टैली का पहले से फैन फॉलोअर हूँ करके, तो ऐसा हो जाता है कि ऐसे नहीं कि मेरे कोई क्लाइंट्स है वो जोहो में रखेंगे बट आईटी रिटर्न तो मुझे फाइल हाँ, करना है। लेकिन आज हमें इसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि नहीं, हमारे इसमें भी नहीं कुछ क्लाइंट्स बिजी में भी है, टैली में भी है, जोहो में भी है। करेक्ट, बस हमारा फोकस एडिट लॉग पे होना चाहिए, और हर सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से तो अच्छा ही है, खाली अरे all three of you are expert. That is why you three are here to showcase how this software can be used as a tool to comply the statutory requirements. मैम मैं भी टैली लास्ट, That is why we have chosen you. We have brought diamonds for our members. Yes. मैंने इसीलिए मैम से एक ही क्वेश्चन पूछा, आपको टैली में पहले क्या तकलीफ है वो बताइए, आप क्यों स्विच करना चाहेंगे, दरकार नहीं है, आप तकलीफ बताइए, अगर वो तकलीफ हम दूर कर सकते हैं तब आप उस पे आओ, अदरवाइज आपको जाने का दरकार नहीं। टैली इज द वेरी वेरी गुड सॉफ्टवेयर। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, if anyone have any question, can unmute and ask question, please. सर यहाँ पे काफी क्वेश्चंस है, बट ऑल ऑफ देम आर मेंशनिंग सम इश्यूज इन टैली ज़ोहो बुक, सो दैट कैन बी अवॉइडेड आल्सो बिकॉज़ ऑल these questions might create even I will request all of the expert to kindly go through the chat box, and if you find something to be explained, something to be replied, Kunal ji, Vandana ji, and Kailash ji, Praveen, if you find anything is to be replied, so kindly reply at the end after Kailash ji. Kailash ji, your session is continuing, na? Yes. Yeah, you have some more things to show, na? Yes. Okay, please go ahead. आप इसके अंदर जो ऑडिट ट्रायल्स का ऑप्शंस है, कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सी क्वेरीज आती है अपने पास कि भाई मेरे 3 कंपनी है जिसमें एक ही आरओसी कंप्लायंस के अंदर है मेरी,
तो अब मुझे एडिट, अगर मैं यूज करता हूँ टैली एडिट लॉग, तो क्या होता है कि मैं तीनों में वो चालू हो जाता है, लेकिन मैडम ने अच्छे से बताया कि वो ऑडिट लॉग को ऑफ कर सकते हैं। तो सेम चीज इसमें भी है, आपको जिसमें एडिट लॉग चाहिए आप ऑन कर सकते हो, और जिसमें नहीं चाहिए आप उसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे फीचर्स हैं, आप इसको यहाँ पे नो कर देंगे। नो करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है क्या है कि मैंने इसको ऑफ कर दिया, लेकिन मेरे जो ऑलरेडी जो एडिट लॉग्स रेडी होके रखे हुए वो डिलीट नहीं होंगे। अगर आपको उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन करेगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर्स में एक बार एडिट लॉग यूज कर लिया, फिर बंद कर दिया, फिर यूज किया, आप इसको यस करेंगे तो जिस डेट से आप चालू कर रहे हैं उस डेट से फिर से आपका एडिट ट्रायल शुरू हो जाएगा। एनीवन? तो सर इसमें ऑप्शन है कि मतलब एक बार ऑडिट ट्रेल हमने टर्न ऑन कर दिया तो बाद में टर्न ऑफ भी कर सकते हैं? यस यस यस, लेकिन क्या होता है कि ये इसके लिए दिया हुआ है कि जिस कंपनी में अपने को यूज माने नहीं करना है, ये आपको प्राइवेट लिमिटेड जो आरओसी कंप्लायंस है उन लोगों के लिए नहीं है, ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। जैसे आपकी एंट्रीज हो जाएंगी ना, ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा, आपको कुछ भी करने नहीं देगा, उसको ना डिलीट करने देगा। वो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना मेंटेन ऑडिट ट्रायल, ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी आपके पास कि अब आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो करने लगे तो फिर सभी कुछ कर पाएंगे। ये है जिनके लिए कि जैसे मेरी प्रोप्राइटरशिप भी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड, तो प्रोप्राइटरशिप में भी क्या लॉगिंग शुरू हो जाएगा, वो नहीं चाहता तो वो यहाँ जाके उसको ऑफ कर सकता है। और अगर वो चाहता है उसको भी रखूं लेकिन फ्यूचर में भी डिलीट कर दूं तो वो भी ऑप्शन। तो इससे क्या कोई डेटा स्टोरेज हमें ज्यादा चाहिए होगा, मतलब या नहीं उतना नहीं ही नहीं नहीं नहीं, बहुत माइनर सी फाइल है, आपको 1 MB 2 MB की फाइल बनती है पूरे साल में, बहुत छोटी सी फाइल। लेकिन एंटरप्राइज एडिशन में तो शायद वो ऑप्शन नहीं है। है नहीं, उसमें खाली लॉग ऑन कर सकते हो, ऑफ नहीं कर सकते। नहीं हो जाता है सर, वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी और उसके नहीं वो आपका जो एंटरप्राइज वर्जन। अच्छा हाँ यस, एंटरप्राइज वर्जन का बात कर रहा हूँ। ये भी अपना एंटरप्राइज वर्जन ही है सर। ये देखिए एंटरप्राइज वर्जन, ठीक है। देखिए इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है बीजी का अभी का। और कुछ क्वेरी? ये सॉफ्टवेयर बहुत इतने फीचर्स है इसके अंदर। मैंने आपको एक छोटा सा जो दुकानदार है जिसको जस्ट अकाउंट चाहिए, दिन भर में कितनी सेल हुई उसका एक सिंपल सा चाहिए, तो वो से लेके जो मैन्युफैक्चरर्स है जिसको प्रोडक्शन फ्लोर वगैरह चाहिए, सब कुछ इसके अंदर है। कि आज अगर मुझे 500 पीस का ऑर्डर आया है तो मेरे पास कितने स्टॉक हाथ में है या कितना मेरे को खरीदने हैं बाहर से, वो सारी रिपोर्टिंग ये बना के देता है एक सिंगल क्लिक में। इसका प्रोडक्शन फ्लोर, इसका जॉब वर्क, देखिए मैं फीचर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका मल्टी गोडाउन, मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स, जॉब वर्क, स्कीम्स जो होती है एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 10 फ्री, वो होता है। जॉब वर्क है इसका, इन हाउस है कि आपका बाहर से करवाते हैं, सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ड है सर। आपको कोई भी कस्टमाइजेशन या किसी भी चीज का इसमें दरकार नहीं पड़ता। इसमें पैरामीटर वाइज डिटेल्स है, पैरामीटर वाइज डिटेल्स होती है सर, जैसे कि अपने शर्ट वगैरह बनाते हैं, एक ही शर्ट है उसके 3 कलर है, 3 साइजेस है वगैरह है, तो आपको आइटम एक ही बनाना है। एक आइटम पे क्लिक करके वो आपको अपने आप बता देगा किस साइज का किस कलर के कितने आपके पास आइटम्स है। एक सिंगल क्लिक पे ऑन द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, और जब आप परचेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा क्या साइज है, क्या कलर है वगैरह, ये सब चीज इसके इनबिल्ड है। बारकोड इसका अपना खुद का बारकोड सिस्टम, आप ऑटोमेटिक बारकोड भी बना सकते हैं। यहाँ से जैसे अपने इसको कर देते हैं जनरेट ऑटोमेटिक बारकोड, तो ऑटोमेटिकली बारकोड भी बना। आपको अगर मैनुअल बनाना है तो आप मैनुअल भी बना सकते हो। आपका इसके अंदर बारकोडिंग, फुल बारकोडिंग सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ड है। प्लस आपके इसके अंदर टारगेट सिस्टम्स हैं, जैसे कि आप अपने भी टारगेट ले सकते हो, आप अपने कस्टमर को भी टारगेट दे सकते हो कि मैंने 3 स्लिप पे टारगेट दे दिया कि भाई आप 1 लाख का अगर सेल करते हो तो आपको मैं इतना % का डिस्काउंट दूंगा, 10 लाख का करोगे तो इतना का, आप 3 स्लिप है और उसकी पूरी रिपोर्टिंग आपको मिलती है, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हो कि भाई आपके टारगेट में अभी 10,000 कम है, अगर आप ये लेते हो तो ये टारगेट के अंदर इस स्लिप में आप आ जाओगे। सेम चीज अपने ऊपर उल्टी होती है कि अगर अपने किसी कंपनी का काम करे, उनका टारगेट्स होता है
तो हमें बार बार देखना नहीं है क्या है, वो टारगेट्स को क्लिक करते हुए बता देगा इस टारगेट में कितनी डिफिशियंसी है या अपने तीन स्लैब में किस स्लैब में पहुंच गए, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस इंप्रूव करता है। इसके अंदर आप ड्रग लाइसेंस है, FSI लाइसेंस, सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ड है। अगर आपका दवाई का भी काम है तो भी काम होता है, कुछ खाने पीने का भी काम है तो वो भी सारा इसके अंदर आप कर सकते हो। गोल्ड का भी है, आपको डेट वाइज प्राइसिंग चाहिए, जैसे गोल्ड के अंदर होती है कि आज के डेट में क्या प्राइसिंग है सर, इसके अंदर आप पूरी मेंटेन कर सकते हो। आपका पार्टी वाइज आइटम कोड है, इसके अंदर ऑप्शंस है। अगर कोई कोई भी आइटम अगर सेल कर देते हो, कस्टमर आता है उसको रिटर्न करने के लिए, तो क्या होता है कि आप उसको वापस अगर सेल करते हो कोई दूसरा आइटम और वो आइटम रिटर्न होता है, तो उसी सेल में उसका सेल्स रिटर्न भी आप बना सकते हो सिंगल इनवॉइस में। प्लस इसकी सबसे बढ़िया चीज है कंसाइनमेंट सेल। ये है सर कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल हो गई आपकी जो अपने जैसे समझिए पोस्ता में क्या होता है कि माल खरीदने वाला कोई है, बेचने वाला कोई, एक मीडिएटर होता है, ठीक है। तो वो मीडिएटर के थ्रू वो मीडिएटर उधर से माल खरीदता है, उसको बिकवाता है, बिल एक दूसरे को इशू होते हैं, बीच में उसको खाली अपना कमीशन लेना होता है। उसका जो बिलिंग सिस्टम्स है, उसने माल बेचा, उसको गया, सब बिल यही करेगा और उसका कितना कमीशन है उसका पूरा का पूरा इसके अंदर सिस्टम बनाया हुआ कंसाइनमेंट सेल का। ये काफी चीज के अंदर लगी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक बार सेटअप कर दिए ऑटोमेटिकली आप बिल बनाएंगे, आपका कितना क्या कमीशन है वगैरह सारी चीज इसमें आ जाती है। जैसे सेल्समैन होते हैं, अपने सेल्समैन के भी। यस मैम। कैलाश जी, वो बैकअप आपने बताया क्या, डिस्क्लोज किया कैसे बैकअप लेते हैं इसमें? इसमें बैकअप का मैडम अपना खुद का अपना सिस्टम्स है। ये देखिए मैं बैकअप सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखिए, या अगर आपको लोकल में बैकअप करना है तो आप वहीं पे भी डिफाइन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली लोकल में आपका बैकअप कर देगा। चाहे आप अपने कंप्यूटर पे लो, चाहे नेटवर्क कंप्यूटर पे लो, आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। प्लस इसके साथ साथ गूगल ड्राइव में आपका ऑटोमेटिकली बैकअप चला जाता है। यहाँ से आप क्लिक किए, जैसे मैंने अपने ईमेल आईडी यहाँ पे कर दी, ऑथोराइज कर दिया, ये अपने आप टाइमली बैकअप, जैसे मैंने टाइमली दे रखा है ये कंपनी का, गूगल ड्राइव में बैकअप जाओ, इट्स ऑटोमेटिकली आपका गूगल ड्राइव में बैकअप चला। और इसके हाँ ऑटोमेटिकली ये इसका अपना इनबिल्ड है, मुझे कुछ भी नहीं है, सब टाइम सेट की हुई है, ऑटोमेटिकली होता है। प्लस ये क्या करता है, जैसे ही आपका बैकअप होता है आपको अपने आप व्हाट्सएप और इसका एक BNS सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैसेज आ जाता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हूँ मेरा मोबाइल नंबर, इसका अपना खुद का एक BNS सॉफ्टवेयर है, बीजी का, बीजी BNS बोलते हैं। तो उस पर मेरे पास मैसेज आया था कि आपका बैकअप सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है, तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहता है। प्लस ये BNS सॉफ्टवेयर के थ्रू आप किसी को भी बिल भेज सकते, जैसे आपके कस्टमर्स है जिनको रेगुलर वर्किंग हो रहा है, तो ये BNS सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करते हैं फ्री, तो जब भी उनका बिल बना या उनका पेमेंट आया तो ऑटोमेटिकली उनके पास मैसेज चला गया। तो वो SMS चार्जेस अभी आप लगा नहीं रहे हो क्या? फ्री है मैम, अनलिमिटेड फ्री है, अनलिमिटेड। हाँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट जो बिजी यूज कर रहा है ना, उनके सब कस्टमर को व्हाट्सएप पे इमीडिएटली वो सेल बिल चला जाता है, इवन पेमेंट भी चला जाता है। यस मैम, एकदम मैम, ऑल फ्री है। हाँ वैसे भी है, और एक सॉफ्टवेयर आता है जो चार्जेबल बेसिस भी है, 3000 साल के लगते हैं, अनलिमिटेड व्हाट्सएप आप भेज सकते हैं। इसका अपना खुद का सिस्टम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है। मैं आपको यहाँ से हम लोग पूरा कॉन्फ़िगर कर देते हैं मैम कि क्या है, SMS भेजना है, व्हाट्सएप है, यहाँ पे इसका अपना पूरा सेटअप है, API कोड वगैरह यहीं पे हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आपका SMS हुआ, व्हाट्सएप हुआ, वो सभी चीज आपको जाना शुरू हो जाती है। और ईमेल बिजी कभी फॉर्म हुआ था, बिजी सॉफ्टवेयर कभी फॉर्म हुआ था? 30 इयर्स हो गया। 30 इयर्स हो गए। यस, अभी इस बीजी कंपनी को इंडिया मार्ट ने खरीद लिया है लास्ट अप्रैल में 500 करोड़ में। तो अच्छा, अभी नाउ इंडिया मार्ट ने खरीद लिया, इंडिया मार्ट ने खरीद लिया, मिस्टर ब्रिजेश अग्रवाल। तो हम लोग की अभी सैटरडे और संडे को हम लोग की नेशनल मीटिंग ही थी, पार्टनर कनेक्ट। तो अभी बहुत सारी चीजें, माने इतनी चीजें आ रही है इसके अंदर। मोबाइल ऐप भी इनका लॉन्च हो गया है और वो भी काफी बहुत बढ़िया मोबाइल, आप उसमें ऐड प्लस जो भी करना सब कुछ उसके अंदर आप कर सकते हो। प्लस इसमें 3-4 वर्जन्स भी आ रहे हैं, क्लाउड के ऊपर भी आ रहा है। कुछ एक महीनों में माने आप देखोगे कि इसका रंग रूप पूरा चेंज हो जाएगा। माने 1 जुलाई से सारे के सारे फीचर्स इसमें आने शुरू हो जाए। माने ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एक छोटे से आदमी से लेके मैन्युफैक्चर तक आप सब कुछ है, इंडेंट है इसके अंदर,
हाँ आपका सेल्समैन है, सेल्समैन की सारी रिपोर्ट्स है, बैंक के, प्लस इसके अंदर आईसीआईसी बैंक की बैंक प्लगिंग भी है, जो कि आपका ऑटोमेटिकली सारा बीआरएस वगैरह सब कुछ बना देता है। आपको जोहो कुछ भी का भी डायरेक्ट है ना बीआरएस? जोहो का यस डायरेक्ट मैम, जोहो का, आईसीआईसी, एचडीएफसी, यस बैंक, एचएसबीसी, इन सब के साथ इंटीग्रेशन है। हाँ, इनका भी आईसीआईसी मल्टीनेशनल के साथ है। हाँ हाँ आईसीआईसी का इनके और साथ जोहो में ये फीचर भी है कि खैर मैं जोहो के अंदर आप वेंडर पेमेंट इंटरनली कर सकते हो, आपको जोहो के अंदर से ही आप कर सकते हो पेमेंट। हाँ, इसके अंदर भी सारा सिस्टम है। करेक्ट करेक्ट, वो तो ऐसा जैसा अपन मोबाइल लेने जाते हो, फिर वो फीचर टिक 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 10 आइडियाज, ऐसे एक बनाना पड़ेगा स्नैपशॉट। वो किसी का कैमरा अच्छा होता है, किसी का वैसे साउंड वैसे अच्छा होता है, किसी हमारे का। अभी जो डिस्कशन हो रहा है, 3 जो अच्छे सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में है, उन सबके फीचर्स, दिस इज अवेलेबल टू द क्लाइंट, दिस इज अवेलेबल टू द क्लाइंट। अब इसके अंदर जीएसटी के अंदर इतना बढ़िया बनाया हो ना, मैं आपका इसका जीएसटी का एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं। अभी समझिए मुझे जीएसटी का जीएसटी लकी, मैंने तीनों सॉफ्टवेयर को देखा हुआ है ऐसा। तो इसमें ऐसा क्या है होता है कि ना कि यू आर औरंगजेब, तो पता ही नहीं चलता वो क्या दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे वर्क ऑन ऑल द सॉफ्टवेयर, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जीएसटीआर 2 वगैरह डाउनलोड होकर रिकॉन्सिल हो जाता है, आपको कुछ भी करने का दरकार नहीं है। अभी टेली में आ रहा है, आई थिंक जोहो में है क्या इंटीग्रेशन? है जोहो में है। ये 2019 से है मैम ये वाला ऑप्शन, पहले 2A था फिर 2B आ गया था। अच्छा है ना, कोई पहले कोई रेस में आगे है, कोई बाद में छूट रहा है। हाँ, ये देखिए ये यहाँ पे ओटीपी आ जाती है, तो आपका जो भी 2A है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। देयर इज वन क्लिक फाइलिंग इन जोहो, आप वन बटन क्लिक करेंगे आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा जोहो। एकदम यहाँ पे भी है ऑटोमेटिकली आपका, मैंने ऑल इसका मैं आपको दिखा ऑल सेड एंड डन, सब कुछ ऑटो तब होगा जब डेटा एंट्री में एरर नहीं है। यस इसकी उसका चेक पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं अल्टीमेटली वो तो ह्यूमन ही करने वाला है। अभी जैसे बारकोड रीडर है इनका बिजी में, लाइक इमीडिएटली पंच होता है, तो देयर आर लेस चांसेस, बट मुझे वो समझ में नहीं आता कि बारकोड से 10 पीस गए हैं कि नहीं, वो स्कैन होता है कि नहीं, दैट इज माय क्वेश्चन। एकदम होता है, एकदम होता है मैम। इसकी जीएसटी की एक रिपोर्ट देखिए, ये इसकी जीएसटी की रिपोर्ट है जो भी रिटर्न में जमा करने जाता हूँ। मैंने इतना सिंपल वे में बनाया हुआ है, आप इस चीज को देखो कि आपका कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, इस टाइप की रिपोर्ट नहीं है अभी किसी को। फिर आपका इनपुट कितना निकल रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है, प्लस आपको क्या, मुझे पेमेंट करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को सिंपल F4 दबाना है। अगर मेरा कोई क्रॉस एडजस्टमेंट है, अगर मैं क्लिक करूंगा मेरा कोई क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं है, और अगर मुझे जीएसटी का पेमेंट करना है तो अपने आप मेरी सारी चीजें रेडी हो जाती है, मुझे कुछ करना नहीं है। ये देखिए मेरे को आज के डेट में क्या पेमेंट करना है, पेमेंट 1,40,000 रुपया मेरा रेडी होके आ गया, मुझे कोई भी एंट्री नहीं करनी, ना कोई कैलकुलेशन करना, कुछ भी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडी हो जाता है। Now software will replace all of us, right? और इसके अंदर आप जैसे ही अपने को रिटर्न देखना है, ऊपर में अपने देख सकते हैं, और ये ऑनलाइन रिटर्न है, यहाँ डायरेक्ट अपलोड अभी क्लिक करूंगा, मेरा GSTR 1 अभी अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने से पहले इसकी खासियत क्या है, 100% मैंने परफेक्ट जाएगा, कोई एरर नहीं, क्योंकि ये एरर सारी नीचे चेक कर लेता है। कोई भी एरर होगी, वो एरर क्यों है, कैसे है, ये हर चीज, HSN समरी हो, आपका नंबर के अंदर अगर कोई गड़बड़ हो कि किसी ने आपने गलती से बीच में डिलीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन ये दे देगा, और कहाँ से क्या है, मैंने किस नंबर से किस नंबर में गड़बड़ी है, वो भी आपको इसके अंदर पूरा दिखा देगा। अब मैं इसको बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरा अपलोड हो जाएगा, एक OTP आएगा, डायरेक्ट अपलोड। और बढ़िया बढ़िया। अभी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मेरे को भी आज का GSTR 1 करना बाकी है भाई। ओके, मुझे भी करना है। और 3B इसका बहुत अच्छा है, ITC टैगिंग बहुत अच्छी है इसकी। क्या होता है कि कुछ बिल अपने नहीं किसी ने अपलोड किया तो ऑटोमेटिकली ITC टैगिंग आपका अलग कर देता है कि भैया मुझे इस महीने नहीं क्लेम करना, अगले महीने क्लेम करना है। ये खुद ब खुद सॉफ्टवेयर याद रखेगा, जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये उसको रिकॉग्नाइज करके बता देगा आपका ये पेमेंट है। और 3B, जो 3B ये ओपन करेगा, और जो आपको साइट पे 3B मिलेगी, एक एक पैसा तक आपको पूरा एक्यूरेट मिलेगा, अगर आपकी एंट्री सही है, एक्यूरेट पूरा का पूरा आपको। और किसी की कोई क्वेरी?
नहीं सर, आई थिंक सवा सात भी हो गया, एंड आई थिंक और the two speakers also want to have to file the returns. मुझे भी अच्छा सर, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के साथ? यस, ये देखिए इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन है उसके साथ डॉक्यूमेंट? हाँ जी, आप आइटम भी कर सकते हो। इसके देखिए यहाँ नीचे फीचर्स है, वोचर इमेज, अकाउंट इमेज और आइटम इमेज। तो अगर किसी का सर्विस बिल हुआ, किसी के यहाँ से चालान कट के आया, तो चालान को मैं इसके साथ टैगिंग कर दूंगा। जब भी बिल खोलूंगा वो बोलेगा मुझे चालान चाहिए, यहीं पे क्लिक करूंगा, वो चालान मुझे पीडीएफ पे ओपन हो जाएगा। आइटम है, उस आइटम का मुझे फोटो देखना है तो वहीं पे आइटम पे इमेज पे क्लिक करूंगा, उसकी फोटो मेरे सामने आ जाएगी, प्लस आपके बिल के ऊपर भी प्रिंट होके आ जाएगा। इसका मोबाइल ऐप अभी है अब या? यस, 2 मोबाइल ऐप है, एक फ्री वाला है और एक चार्जेबल वाला है। 1800 रुपया पर ईयर, और फ्री वाला फ्री है। 2 रकम से आप यूज कर सकते हो, 2 मोबाइल ऐप है। I think Kailashpati sir has covered both audit trail and GST also in the busy software. He has optimally utilized the platform to cover both the aspects. And Nitesh sir, can we take the closing remarks? I think Mohit sir has left because of some urgent meeting. Okay. So any of the speaker wants to ask something? Indeed, it was a very interesting session. We were thankful to Sanjeev sir also. He actually clearly mentioned what is MCA's directions, Very good. So now all the software vendors here present will take cognizance of that. And Nitish sir, it is a right time you nailed, बोलते ना, सही time पे आपने सही program organize किया. And to start with 500 participants, मतलब जो यहाँ Zoom पे थे, बाकी सब live पे थे, तो it is itself as an achievement, shows how much efforts you are putting, पहला शब्द તમે જરા સ્ક્રીન સ્ટોપ કરી નાખો તો આપણે બધા આવી જાય સ્ક્રીન પર. સ્ટોપ શેર કરવું પડશે. તો તમારો એક ગ્રુપ ફોટો લઈને આપણે ક્લોઝિંગ રિમાર્ક્સ પર જઈએ. बनता है ना भाई, इतनी मेहनत के बाद. एकदम बनता है. क्या होता है, सी ऑल सॉफ्टवेयर को एग्जिस्ट. इतने सारी मोबाइल कंपनीज जैसे बोलते हैं, वीवो होगा, के रेडमी होगा, सैमसंग होगा, अपना क्या एप्पल होगा, तो सब को एग्जिस्ट करते हैं. वैसे सॉफ्टवेयर भी को एग्जिस्ट करेंगे. सो लेट्स जिनको जो रिक्वायरमेंट है वो यूज करेगा. एज सिंपल एज दैट. Competition should be there. तो ही अपग्रेडेशन आएगा ना. Yes, it's good for audience and everyone. They get choice, choice to choose between. Healthy competition. Yes, I would like healthy competition is always welcome. Yes. Even I would like to thanks Nitesh sir, because इतनी बड़ी audience को represent करने का मौका मिला. This is the first time मैंने इतनी audience के सामने आज कोई presentation दिया. So this is thank you very much sir. Same here. Thank you everyone कि मुझे इतनी अच्छी opportunity मिली. मुझे सुयस को थैंक यू करना है, सुयस तुलसियम सर को. इन्होंने मुझे मुंबई से यहाँ पे ब्रीच किया है. मुझे भी तुलसिया ने ही इनवाइट किया. Because I am from Delhi, so yeah, so you can thank so Joho Mr. Narak. Yes. And also we always search for the best one. So in this connection, we ask, we connect with so many persons so that we can get the best one. So that is how we try to pick up for our programs. So thanks to all of you. So your presence had only made this program one of the best programs. Thank you, Vanna ji. Thank you, Kunal ji. Thank you, Kailash ji. And thank you, audience. Thank you very much, my sir. heart. Nitesh ji, can I give a vote of thanks to all of you? All of you. Formal vote of thanks followed by formal vote of thanks to banta hai. And I'm also giving my contact details in chat if anyone would like to connect with me, so he can connect with me. Yes, definitely. All of you can please Kailash ji, you can also put share the contact details. And last year I had the opportunity to meet Membu sir also.
from Zoho last year. Very down to earth person. So I, Naveen Singhal, would like to thank all our speakers, Kunal sir, Vandana ma'am, Kailashpati sir, and the person who kept all of us glued together, Mohit sir in absentia. You have all of you have mapped the edit logs functionality with the requirements of law. I am pretty sure that the precious knowledge will definitely help each and every one of us in our day-to-day work. And Vandana ma'am has rightly said that technology will replace all of us. And all the participants, this video is available on the YouTube channel, and also we have another seminar on 14th of April. So please do register for that also. Thank you so much, each and every one of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Meet you in the next program on 14th. Then physical program also we are having on 29th at BCCI on charitable trust. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much.